role. Role is part played by someone in a specific circumstances, whereas function is the natural purpose of something, what something does or is used for. A function is the organizational representation of set of similar job descriptions, and it provides us with a way to structure tasks and roles. A DDO's role is like an obligation, but his function is the usefulness of his role that have been assigned to him. So ultimately, we conclude that DDO has DDO has role, DDO has responsibility, and DDO has function. So it is an obligation that he is performing his role, but उसकी जो फंक्शनिंग है वो उसकी यूजफुलनेस है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही यूजफुलनेस है वो जितना रिस्पॉन्सिबल होगा. सो वो अपना जो फंक्शन है उसको बेहतर बनाते हुए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी बेटर स्पेंडिंग के अंदर, अपने नए बजट की जो है एलोकेशन के अंदर, अगले साल की बजट की तैयारी के लिए, पिछले बजट में एडिशनल फंड्स लेने के लिए, उसके एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने के लिए, फॉर ऑल द एक्टिविटीज वो जितना बेहतर काम करेगा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन उतना ही सक्सेसफुली वर्क करेगी. Rule 2.1 of Punjab Financial Rule says that every government is personally responsible for the money which passes through his hands from a record of receipts and payments and correctness of the record in every respect. We are actually talking about the DTO's duties, role and responsibility and function in the area of withdrawal of cash. Whenever the DTO withdraws the cash from the government treasury against some bill or against some expenditure which has already been allocated in the annual budget. So after that, he is solely responsible, including all the people who are being paid that money. Because DTO is not drawing that money for his personal use. He is drawing the money either for the either for the college, for the activities in the college, for employees, financial benefits and financial emoluments, and vendor payments, they are involved in the cash. So every person that comes in that chain, he is responsible for either the correct and valid claim or faulty or false claim. अगर कोई करप्शन होती है, कोई एम्बेजलमेंट होती है, किसी में अमाउंट की कमी ज्यादती है, तो जो जो शख्स उसकी गलती में शामिल है, जिसके सिग्नेचर्स डॉक्यूमेंट्स पर आते जाएंगे, तो वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता चला जाएगा. दैट प्ली और द जस्टिफिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल के जी अमाउंट जो है अकाउंट क्लर्क ने वो जी कैलकुलेट की थी, उसने पुट अप किया था और मैंने बस सिग्नेचर किए थे, मैंने डॉक्यूमेंट नहीं देखा. So whenever you are signing a document, you are actually taking the responsibility that on your end you have examined all the documents properly, you have checked all the amounts, you have checked the name of the payee, and all the attached documents are sufficient to prove a case successful in the utilization of the budget allocated by the government to your college or the department. Rule 2.1 to 2.14 and 2.33 of Punjab Financial Rules, Volume 1, relate to the following items. No cash withdrawals from government exchequer until required for immediate disbursement. It means that cash withdrawals are not allowed in the normal circumstances. They are only allowed for emergency situations or for immediate disbursement. Immediate redeposit of cash not likely to be disbursed. The cash which is being handled by the cashier or the DDO or in the safe custody of the DDO, if the DDO realizes that in January or February, the cash is not going to be used before the 30th of June, which is the end of financial year. So ultimately, he has to redeposit that cash in the government treasury. Immediate and transparent accounting of cash withdrawals. Um, Immediate and transparent accounting means that all kinds of recording should be complete, clear, and transparent in all the manner. And maintenance of cash book is one of them. In that is a part of transparent accounting, that there is a register named cash book in every college in which all the transactions, either they are coming, either they are being debited, it means you are getting cash,
or you are expending that amount, that cash is being expensed. So in both cases, you have to record that who gave the sanction, upon what vendor's name that was given, on what date, and for what purpose that was given, or some employee who has got that money in return of medical reimbursement, for example, or some TADA bill. So the purpose and the amount of the bill that has to be recorded, and each and every information in a summarized form that is to be written in cash book. Then safe custody of public money in hand. अ, जितना भी पैसा डीडीओ के पास होगा, वो उसको सेफ कस्टडी में रखने का रिस्पॉन्सिबल होगा। खुदा ना खास्ता पैसे गुम जाते हैं, पैसे कम पड़ जाते हैं और याद नहीं आता कि अच्छा कहाँ खर्च हो गए, कहीं गिर गए, कहीं चोरी हो गए। सो उसको सेफ कस्टडी में रखना ज़रूरी है। सेफ के अंदर रखना ज़रूरी है, ना कि दराज के अंदर आप रख सकते हैं, ना ही अपने ज़ाती पैसे के साथ इसको मिक्स किया जा सकता है। सो इन केस ऑफ एनी इंस्पेक्शन पूछा जा सकता है कि जनाब आप कैश कहाँ रख रहे हैं, सो हमें दिखाएं वो सेफ किधर है। सो अल्टीमेटली यू हैव टू शो कि अच्छा यहाँ पे रखा जाता है, उसके साथ ये सफ़ा रखा जाता है कि ये इतना कैश है और इसमें से इतना खर्च हो चुका है और इतना इसमें पिछले चंद दिनों में इजाफा हुआ है। देन परमानेंट एडवांस में बी kept in bank account approved by FD. In some of the departments, permanent advance is given to those departments. For example, emergency services, rescue 1122, or some other emergency kind of services, fire brigade and ambulance services, so that in case of any emergency, they don't have to do the paperwork, so they can expense with that amount, and ultimately in the pre-audit they can uh, get that amount recouped. So in permanent advance, higher education department is not covered because it's not an emergency service, but in the rules of DDO, obviously there comes a whole chapter of permanent advance. We'll be skipping that, but this was an idea to give you a glance over that permanent advance thing. Then vendor payments. Vendor means thekedar. Vendor means a private person who is not a government employee, but who is providing the college or the office some goods, some manufactured goods, some services, or some civil work or engineering work. Vendor payments are in reimbursable mode until advance payment is sanctioned by FD in term of note under clause K of rule 2.10। अच्छा, इसमें reimbursable mode ये होता है कि ठेकेदार अपनी तरफ से सारे पैसे लगा रहा है, वो उसको बाद में आप रीइम्बर्समेंट करते हैं। काम होगा, देन उसके बाद उसको उसकी पेमेंट होगी। अब जाहिर है अगर उसने फर्नीचर बना के दिया है, या आपको उसने एलसीडी सप्लाई की है, या कंप्यूटर्स दिए हैं, तो उसने अपनी जेब से उसकी जो कॉस्ट है वो पूरी की है और आपको दी है और आपको बताया कि जनाब आपका बिल इतना बन गया है। सो उसको उतने पैसे रीइम्बर्स हो जाएंगे, इंक्लूडिंग जब वो बताएगा कि मैंने टैक्स भी इतना देना है, सो वो टैक्स भी आप विद होल्ड करेंगे। तो ये रीइम्बर्सेबल मोड होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में सैंक्शन एडवांस फॉर स्पेंडिंग एंड रिकवरी। अच्छा, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं उसमें ना एडवांस पेमेंट इन्वॉल्व होती है। वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हो सकती है, A03 इसका कोड है, A09 फिजिकल एसेट्स में। जैसे मैंने फर्नीचर का कहा कि अगर क्लासरूम्स के लिए फर्नीचर्स हैं, चेयर्स हैं, डेस्क्स हैं, कुछ और क्लासरूम के लिए सप्लाईज हैं, बोर्ड्स हैं एंड ऑल दैट, वो फिजिकल एसेट होते हैं, उनकी वो उन्हीं को हम यूज़ करते हैं फॉर आवर सर्विसेज। जो जो एजुकेशन हम इम्पार्ट कर रहे होते हैं, उसके लिए जो भी चीज़ परमानेंटली हम यूज़ करते हैं वो एसेट कहलाते हैं। एंड देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उन्हीं की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, वो फर्नीचर की हो सकती है, वो खिड़कियों दरवाज़ों की हो सकती है, वो बिजली की तारों की हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकती है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसकी एडवांस पेमेंट ली जा सकती है। समटाइम ठेकेदार कहता है जी कि मैंने जी लेबर को मूव कराना है, मैंने बजरी, मैंने ईंटें, मैंने सरिया, मैंने फला फला चीज़ें जी करनी है, तो वो मैंने मार्केट में पहले पेमेंट करनी है।
सो उसको हम मोबिलाइजेशन चार्जेस कहते हैं कि वो मोबिलाइजेशन चार्जेस लेकर एडवांस पेमेंट लेकर अपना काम शुरू करता है। वेंडर पेमेंट्स इज एविडेंस बेस्ड। अच्छा, ये जो ठेकेदार का काम होता है, ये यकमुश्त इसको पेमेंट नहीं होती। एविडेंस बेस्ड का मकसद ही ये होता है, रीइंबर्सेबल मोड जो हमने अभी पीछे पढ़ा, इसमें उसने यही इवेलुएट करना है कि आपसे जो अग्रीमेंट हुआ है उसका, उसने जब आपने टेंडर नोटिस दिया, उस नोटिस के जवाब में उसने अपना शो ऑफ इंटरेस्ट किया। इंटरेस्ट शो करने के बाद आपने उसे कहा कि आप कोटेशन दें, उसने अपनी कोटेशंस दी, आपने कोटेशंस की कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जो टॉप थ्री वो लोग थे उनको आपने सेलेक्ट किया, या जो उसमें चीपेस्ट रेट आपको प्रोवाइड कर रहा था, मोस्ट इकोनॉमिकल था, आपने उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया, वर्क ऑर्डर उसे हम कहते हैं। वर्क ऑर्डर जब आपने प्लेस किया तो क्या हुआ, उसने काम शुरू कर दिया। अब जाहिर है इसके पीछे पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन है कि आपने डिमांड क्या किया था कि हमने जी ये कमरा बनवाना है, आईटी रूम बनवाना है, ये हमने एकेडमिक ब्लॉक बनवाना है, या हमने बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी है। उसकी जो भी डिटेल्स होंगी उसके साथ आपकी एक क्वालिटी तय हो जाएगी। या आपने कंप्यूटर लेना है, ये इंटेल के फलां कंप्यूटर फलां जनरेशन के लेने हैं, स्क्रीन इस साइज की लेनी है, इस कंपनी की लेनी है। सो अगर बाद में उसको वो फॉलो नहीं करता, या कहीं पे वो हैंकी पैंकी करता है, या उसमें उस एग्रीमेंट के मुताबिक आपको सप्लाई नहीं देता, आइदर इन द क्वालिटी और इन द क्वांटिटी, क्वांटिटी भी कम ज्यादा हो सकती है या क्वालिटी भी फर्क आ सकता है उसमें। सो आपने उसको फेज वाइज पेमेंट करनी है। और जहां पे भी आपको लगे कि ये यहाँ पे फर्क आ रहा है, बिल्डिंग इसने ऐसे बनानी थी, ये मटेरियल इस्तेमाल करना था, ये वो सीमेंट नहीं यूज कर रहा, ये वो ईंट और सरिया यूज नहीं कर रहा, मतलब जो भी उसके साथ आपका एग्रीमेंट में रिटर्न में चीज लिखी हुई थी वो उसको फॉलो नहीं कर रहा, सो उस फेज की पेमेंट उसकी रुक जाएगी और काम फिर आगे नहीं बढ़ेगा। सो एविडेंस बेस्ड है। डीडीओ ने, प्रिंसिपल ने, वाइस प्रिंसिपल ने कंटिन्यूअसली उसमें चेक रखना है, डॉक्यूमेंट्स को भी देखना है और फिजिकली भी उस चीज़ को देखना है कि अच्छा ये सप्लाईज आई हैं, ये सर्विसेज हैं एंड ऑल दैट। सो इन तीन चीज़ों में वेंडर पेमेंट्स जिन तीनों में इन्वॉल्व होती हैं। गुड्स हैव बीन सप्लाइड एज पर स्पेसिफिकेशंस एंड quantities in accordance with the agreement. Services have been provided in accordance with the agreement. And the third thing is works. Goods, services, and works. These three things fall in the sphere of vendor payments. So works have been done in accordance with the agreement. Works means three, four types of works: civil works, civil engineering works, electrical works, chemical, or anything which involves a specific specialities of engineering. Then vendor claim is valid and enforceable in the court of law. Any document that involves the vendor payments are enforceable at law. That means they are recognized by the court, and either of the parties, either college or the vendor, they can go to the court and can say कि अच्छा जी ये हमारा ये agreement हुआ था, ये दूसरी पार्टी ने ये इसकी violation की है, इस वजह से जी इसको पेमेंट नहीं होगी। Every public servant should exercise the same vigilance in respect of expenditure from public money as a person of ordinary prudence would exercise care in respect of expenditure from his own money. That is a golden principle written in every book of finance and uh, uh, accounts, that says that every individual involved in the financial payment would exercise the same vigilance. It means the same sensitivity that a person of ordinary prudence would exercise, an ordinary person would exercise care in respect of expenditure from his own money। जिस तरह से हम अपने पैसे का ख्याल रखते हैं कि अच्छा हमारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, हम क्या लेने जा रहे हैं, वहां जाके पहले उस चीज की अवेलेबिलिटी पूछते हैं, फिर उसका भाव पूछते हैं, फिर उसको कम करवाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हमारी जो इरादा होता है या रेंज होती है हम उसके मुताबिक उसको हासिल करते हैं, एंड देन हम उसको पेमेंट करते हैं। और पेमेंट के बाद भी हम पूरे पैसे गिनते हैं कि अच्छा अब ये इतने की आई है और इतने पैसे मुझे बकाया मिल गए। सो जिस तरह से हम अपने जाती अखराजात करते हैं, उसी हसासियत के साथ, उसी माइंडफुलनेस के साथ, उसी विजिलेंस और एक्टिव जो है ब्रेन के साथ हमने पब्लिक मनी जो है, जो सरकार का पैसा है, उसको खर्च करना है। नो इंकरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर अनलेस इट इज सैंक्शनड बाय द
अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन। अच्छा, हर जो स्लैब है, मसलन 10,000, 20,000, 50,000, लाख, हर डिपार्टमेंट की एक स्लैब बनाई गई है कि किस लेवल का बंदा कितने खर्च तक की सैंक्शन दे सकता है। सो ये हमारी जो है बुक्स जो हैं रूल्स की, पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2016 की, उसके अंदर अगर आप देखें तो वो सारी की सारी उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसकी डेलीगेशन और उसकी सेक्रेटरी से लेके नीचे तक गिवन है कि किस ग्रेड का बंदा कितने तक की सैंक्शन दे सकता है। और जाहिर है जब उससे ऊपर अमाउंट जाएगी तो फिर उससे हायर अथॉरिटी उसकी सैंक्शन देगी। हम इसका तोड़ क्या करते हैं, जो नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में तरीका फॉलो होता है कि हम एक की बजाय दो बिल बना लेते हैं। हमें पता है कि अगर 1 लाख रुपए तक जो है वो प्रिंसिपल सैंक्शन कर सकता है, ये एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, 1 लाख तक अगर प्रिंसिपल सैंक्शन कर सकता है, तो वो कहते हैं जी कि मेरी 2 लाख की पेमेंट है तो मैं लाख लाख रुपए के दो बिल बना लेता हूँ, सो मेरे प्रिंसिपल से ही सैंक्शन हो जाए। क्योंकि अगर 2 लाख होगी तो फिर उससे हायर अथॉरिटी के पास बिल चला जाएगा और पता नहीं कितना टाइम लगे और फिर उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। सो बेहतर यही है कि यहाँ पे ही थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लो, कागजात डबल बना लो। सो ये बेसिकली बाद में क्या होता है कि ऑडिट में ये चीज कवर हो जाती है, पकड़ी जाती है, और फिर बाद में इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है कि हमने इसको ब्रेक डाउन क्यों किया, जबकि असल रीजन यही होता है कि लोअर अथॉरिटी की पावर में लाने के लिए हम ये काम करते हैं। Public money should be utilized for the benefit of a particular person or section of the community. Uh, we have to ensure that nobody is getting personal benefits from the public money. Payment is charged to the relevant object of expenditure. Total expenditure should not exceed the grants allocated for the purpose. There is a concept of object code. Uh, in the previous slide, we had that term. Uh, the last line of the first paragraph under relevant object code. Object code is basically a predefined set of codes given to all types of transactions. So we use that object code for our specific uh, transaction. So we should know, we should have a book of chart of accounts in which all the transactions have been given a specific code, a predefined code that is used by the computer or all the manual worker, so that we could understand that this specific code is for hot and cold charges. This specific code is for officers' pay. This specific code is for allowances. This specific code is for fuel, petrol. This specific code is for repair and maintenance. This specific code is for furniture and fixture and all that. Laid down procedure to disburse the money to the vendor has been adopted. Mode of payment by check or cash, subsidiary according to the subsidiary treasury rules. Necessary acknowledgement pays receipt. APR, acknowledgement pays receipt, that we normally called as receiving, के जी हमने receiving ले ली है। जब एक ठेकेदार को आपने पेमेंट की है, वेंडर को 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का आपने चेक दिया है, सो उससे आपने उसकी रिसीविंग भी लेनी है और आपने उसकी कैश बुक के ऊपर रिसीविंग लेनी है कि यस ये इंस्ट्रूमेंट नंबर, ये चेक नंबर फलां डेट का इस वेंडर की फर्म के नाम पे या इस वेंडर के नाम पे जो आया था, ये हमने इसे रिसीव करवा दिया है। वॉच द डिडक्शंस ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस एंड रिकवरीज पेनल्टीज एज पर अग्रीमेंट, और उसकी जितनी भी टैक्स की कटौती होनी है वो आपने करनी है। वो आपने टैक्स का शेड्यूल मंगा के देखना है कि अच्छा किस वर्क के ऊपर या किस गुड सप्लाईज के ऊपर 16% है, 17%, 18% वो जीएसटी है। और उसकी जो रिकवरी करनी है, अगर उसने कोई डिले किया है, आप अग्रीमेंट में लिखते हैं कि आपने 3 महीने के अंदर ये काम खत्म करना है, लेकिन वो 3.5 या 4 माह के अंदर काम खत्म करता है, तो ऑब्वियसली आपने उसके अंदर लिखा होता है कि आप डिले करेंगे तो पर डे के हिसाब से हम आपके इतने पैसे काटेंगे। सो उसकी जो रिकवरी है वो भी आपने एट द एंड ऑफ द वर्क वो करनी है और उसको कैश बुक में लिखना है। 1 लाख तक की जो पेमेंट है टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स शैल नॉट बी मेड इन कैश।
जो 1 लाख से ऊपर की पेमेंट है वो थ्रू कैश नहीं हो सकती, वो क्रॉस्ड चेक के थ्रू ही होंगी। और जो है उससे नीचे की हो सकती है, 1 लाख से नीचे नीचे की जो अमाउंट्स हैं वो ज़्यादा पैटी अमाउंट्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स उनके लाखों के बिल बनते हैं। सो नॉर्मली क्रॉस चेक के थ्रू ही उनको पेमेंट हो रही होती है। वो जो चेक होता है वो वेंडर का ही चेक होता है, लेकिन उसको ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो डीडीओ होता है वो रिसीव करता है एजी ऑफिस से। The Accountant General Punjab shall then issue a cross check in favor of drawing and disbursing officer who will collect it either personally or through his authorized agent. The drawing and disbursing officer will then endorse the check in favor of the contractor, supplier, and deliver it to him on proper identification and obtain his acknowledgement. वो यही बात के वो एजी से ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो है वो चेक वो लेगा और फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको रिसीव करवाएगा। Payments to employees are for pay and regular allowances and for personal claims like reimbursement of medical charges and TA. अब ये एम्प्लॉय पेमेंट्स के मामलात में जो डीडीओ की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो पे है, पे फिक्सेशन, जब हमारी इनिशियल जब हम देते हैं, हाजिरी देते हैं, जब हम हमारी ज्वाइनिंग होती है किसी भी कॉलेज में हम जाते हैं तो हमारी पे फिक्स होती है। हमारी बेसिक पे हमारे स्केल के मुताबिक होती है। फिर जितने जितने अलाउंसेस हमें एडमिसिबल होते हैं वो उसके साथ लग जाते हैं। इस सारे को पे फिक्सेशन कहते हैं। और फिर जब इवन हमारी प्रमोशन होती है तो प्रमोशन पर भी हम किस स्टेज पे जाते हैं, वहाँ पे कितनी अमाउंट है, कितनी डिडक्शंस है एंड ऑल दैट, वो सारी पे फिक्सेशन कहलाती हैं। ये सारा काम डीडीओ ने करना होता है। फिर रेगुलर अलाउंसेस, कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो हमारी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं। एक हमने पहले क्वालिफिकेशन नहीं की हुई थी, एमफिल या पीएचडी, अब हमने कर ली है तो जाहिर है जब से कर ली है तब से हमारी एडमिसिबिलिटी बनेगी। सो ये सारी चीज़ें उस हमारी जो चेंजेस आती हैं ये भी सारी डीडीओ ने लुक आफ्टर करनी है। और वो जो चेंज फॉर्म जिसके अंदर हमारी पे फिक्सेशन या हमारे एमोलमेंट्स या अलाउंसेस के अंदर थोड़ी चेंजिंग आती है तो वो भी डीडीओ ने भिजवानी होती है। एंड टीए और मेडिकल रीइंबर्समेंट जो है ये सारा उसने बिल भेजना होता है। पेमेंट टू एम्प्लॉयज आर थ्रू पेरोल डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम। एम्प्लॉयज को जो पेमेंट है इसके अगेंस्ट वो चेक के थ्रू नहीं होती। जो हमारी हैं पेमेंट्स वो हमारे अकाउंट में आती हैं। हम जो गजटेड ऑफिसर्स होते हैं उनकी पेमेंट्स उनके अकाउंट में आती हैं, जिस तरह से हमें तनख्वाह हमारे अकाउंट में आती है, लेकिन ऑब्वियसली उसके पीछे जो डॉक्यूमेंट होता है वो डीडीओ ने भेजा होता है। ईच एम्प्लॉय इज पेड अगेंस्ट अ पोस्ट ऑफ हिज स्केल in the budget. Personal data given by DDO and fed by AG या DO and pay fixed by DDO and verified by AG DAO. जो हर एम्प्लॉय है उसको अपनी पोस्ट की जो है वो पे दी जाती है। और पर्सनल डाटा हमारा जो वेरीफाई होता है कि हमने कितनी छुट्टियां की हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा सीएनआईसी क्या है, जो वो सारी चीज़ें वो डीडीओ ने वेरीफाई करनी होती है। एंड देन एजी ऑफिस में या डीओ ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में वो दोबारा से वेरीफाई होती हैं। डीडीओ इज रिक्वायर्ड टू सबमिट चेंज फॉर्म इमीडिएटली। ये जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो मुख्तलिफ केसेस में हमारी तनख्वाह कम या ज़्यादा हो जाती है, जैसे हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव ईओएल जिसे कहते हैं, या दूसरा नाम डी लीव विदाउट पे भी हम कहते हैं। उस केस में ज़ाहिर है हमारी तनख्वाह बंद हो जाती है। सस्पेंशन, हम सस्पेंड हो जाते हैं, उस केस में भी हमारी तनख्वाह जो है वो एक उसके कुछ अलाउंसेस कम हो जाते हैं। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी और ट्रांसफर एंड फॉलो द चेंज फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और जब हमें पेनल्टी लगती है कि जनाब ये बंदा यहाँ से इसको 1 साल या 2 साल का इंक्रीमेंट इसका रोक दिया जाए, उस केस में भी डीडीओ ने इन्फॉर्म करना होता है एजी या डीओ ऑफिस को कि ये जनाब पेनल्टी इसको दे दी जाए। नेसेसरी एंट्रीज इन एम्प्लॉय सर्विस बुक, जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज होते हैं जी उनकी सर्विस बुक होती है। और वहाँ पे उस सर्विस बुक के अंदर जो भी उनकी हिस्ट्री होती है, रिकॉर्ड होता है, वो डीटीओ ने अपने इनिशियल्स के साथ वो उसको मेंशन करना होता है।
Non-salary payments to employees are although made through DCS, unlike vendor payments, yet after fulfillment of prerequisites like vendor payments by submission of claim or bill, grant of sanction, charged against budget under relevant object. So ये जो नॉन सैलरी पेमेंट होती है एम्प्लॉयज की, जैसे किसी के एरियर्स हैं या ये जो अलाउंसेस की हमने बात की, तो उस केस में जो है वो चेक भी बन सकता है. But unlike vendor payments, yet after fulfillment of prerequisites like vendor payments by submission of claim, bill, grant of sanction, so उसका स्पेशल बिल भी भेजा जा सकता है और वो उसका चेक भी बन सकता है. बट क्या होता है कि कैश में किसी सूरत पेमेंट नहीं होगी. Advances are granted to government servants who may have to make urgent payments before they can place themselves in funds by drawing bills. They are subject to the following rules. अब ये जो एडवांसेस हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को, अच्छा ये परमानेंट एडवांस की बेसिकली हम बात कर रहे हैं. सो ये परमानेंट एडवांस ये हमारा मुख्तलिफ महकमों को जो दिया जाता है, ये जो कि हमारे हायर एजुकेशन में इट इज़ नॉट दैट applicable. So we'll be skipping that. Now we are talking about maintenance of accounts. अच्छा ये आप शायद डर रहे हो या आप घबरा रहे हो कि ये अकाउंट्स, ये तो बड़ा को टेक्निकल काम होता है और बड़ा मुश्किल काम होता है, ये क्या हम इसकी बात कर रहे हैं, हम कैसे इसकी मेंटेनेंस करेंगे. बट अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है उसमें आपको पता है कि जो हमारा एजुकेशनल काडरे है वो ही लुक आफ्टर करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी. वी डोंट हैव एनी एडिशनल cadre फॉर एजुकेशनल और हेल्थ रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये अब आपको एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये करना ही पड़ेगा. आप में से जिन लोगों ने प्रिंसिपलशिप की है या कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बल्कि चीज़ों को सिर्फ प्रॉपर ऑर्डर में, स्ट्रक्चर में लिखना, नोट करना, बस उस पैटर्न को सीखना होता है. सो हमारे पास कई किस्म के रजिस्टर्स होते हैं जी. सादा रजिस्टर्स होते हैं या कुछ अकाउंट्स के भी बने उसी तरह उनकी प्रिंटिंग हुई होती है. सो उसमें कॉलम्स बने होते हैं, उन कॉलम्स में हमें फिल करना होता है अपने हर एक्सपेंडिचर की डिटेल को. इस सारे प्रोसेस को मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है. DDO इज टू रिकॉर्ड प्रॉम्प्टली ईच ट्रांजैक्शन इन कैश बुक. जो भी उसकी ट्रांजैक्शन होगी उसको प्रॉम्प्टली लिखना है, यानी उसी टाइम पे जब भी कोई बिल आएगा आइदर फॉर पेमेंट और फॉर एक्सपेंडिचर, वो फौरन उसको नोट करेगा अपने कैश बुक के अंदर. और कैश बुक में भी डिफरेंट जगह बनी होती हैं, आगे मैं बताऊंगा कि वो किस साइड पे और किस तरह से किस पैटर्न के अंदर वो नोट करेंगे. DDO's कैश बुक इज अ रजिस्टर. ये एक रजिस्टर का नाम है जो कि पंजाब फाइनेंशियल रूल्स वॉल्यूम 1 के फॉर्म 1 के अंदर गिवन है कि वो जो कैश बुक आप बनाएंगे, सादा रजिस्टर्स पे भी आप अगर लाइनें लगाते हैं तो आप कौन कौन से कॉलम बनाएंगे. DDO is to record payments drawn from the treasury and their disbursement, giving away to the concerned claimant. एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इसमें डेट वाइज होता है जी. जो यकम की पेमेंट है, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और इस तरह से. ऐसे नहीं हो सकता कि आज आप 3 तारीख की एक पेमेंट लिख लें और 2 दिन के बाद फिर यकम की एक पेमेंट लिख लें. और इवन के अगर सेम डे में 2, 3, 4 बिल्स आ रहे हैं या मुख्तलिफ पेमेंट्स हो रही हैं, तो उसमें भी टाइम का ऑर्डर होना चाहिए कि जो सबसे पहली दिन में आपको मिली वो सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे. All cash transactions should be entered in the cash book as soon as they occur and attested in token of check. Cash book should be closed regularly and completely checked. In token of the check of the cash book, the last entry checked therein should be initialed. इनिशियल करने हैं, जहां तक DDO चेक करता जाएगा उस पर टिक लगाता जाएगा हर ट्रांजैक्शन को, और जहां तक वो चेक कर लेगा वहां अपने इनिशियल करेगा विद डेट कि मैंने इस डेट को यहाँ तक इसको चेक कर लिया है बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न ऑन ईच ओकेजन. जब जब उसको चेक करेगा, फिर एक मंथली क्लोजिंग होगी. मंथली क्लोजिंग में इट इज़ एन ऑब्लिगेशन के वो जो जिस महीने के वो पेज होंगे जिसके ऊपर रिकॉर्ड आप लिख रहे होंगे, वहाँ नीचे आप लाइन लगाएंगे. लाइन लगा के नीचे आप बीइंग DDO अपने सिग्नेचर करेंगे और एक सर्टिफिकेट देंगे कि आपने सारी ट्रांजैक्शंस को बगौर देख लिया है, उसमें कोई गलती नहीं है और जो थी उसको करेक्ट कर लिया गया है.
और ये अब हमारी पोजीशन है, मंथली पोजीशन। तो फिर आप उसमें अलॉन्ग विद द स्टैम्प सिग्नेचर कर देंगे। इसको हम मंथली क्लोजिंग कहते हैं। अब जाहिर है जो एक बिल होता है या एक ट्रांजैक्शन होती है, एक्सपेंडिचर भी और पेमेंट भी और रिसीट्स भी, वो उसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम अलग फाइल्स बनाते हैं। जो हमारी रिसीट्स होती हैं, जो कि हमें पैसा आ रहा होता है या गवर्नमेंट किटी से हम पैसा निकाल रहे होते हैं, उनको हम रिसीट वाउचर्स कहते हैं, आरवी। आरवी, रिसीट वाउचर्स। उसको हम क्लब कर देते हैं, पिन कर देते हैं एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको। फॉर एग्जांपल हम स्टेपल कर देते हैं, स्टेपल करके हम उसके ऊपर एक छोटा सी चिट लगा देते हैं कि ये आरवी नंबर 28 है, आरवी नंबर 50 है, आरवी नंबर 73 है। सो वो कैश बुक के अंदर हम जब उसका लिखते हैं कि ये आरवी नंबर 63 है, ये रिसीट वाउचर नंबर 63, उसके जो समराइज चीज़ें हैं, तीन चार चीज़ें हम लिख देते हैं। उससे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जब भी चेक होंगे, ऑडिट वाले आएंगे, वो आपकी कैश बुक देखेंगे कि कौन कौन सी कितनी कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, एंड देन वो कहेंगे जी फलां आरवी ले आए। तो वो फिर आप आरवी की फाइल उन्हें देंगे, तो वो उससे रेलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड उसको चेक कर लेंगे। इसी तरह से एक फाइल होगी पीवी की, पेमेंट वाउचर्स। फिर जो आपके थ्रू पेमेंट हुई है आइदर टू एम्प्लॉयज और टू द वेंडर्स, तो वो आप पीवी के जरिए पेमेंट वाउचर उसकी फाइल बनाएंगे। हर ट्रांजैक्शन जो आपने की है, जो पैसा दिया है, उससे उसके बारे में सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्टेपल किए होंगे और उसके ऊपर लिखा होगा कि पीवी नंबर 23, पीवी नंबर 65 एंड ऑल दैट। तो वो कैश बुक में आप सिर्फ उसका रेफरेंस यूज करेंगे, बाकी जो डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए आप अलग फाइल यूज करेंगे। The entries in the cash book of the checks drawn from the AG or DO or Treasury office should be compared and checked with the list of the checks or Treasury schedules issued by the AG office, District Account Office, or Treasury office. A certificate to this effect be recorded in the cash book. वो जो जितनी भी वो हैं आपकी ट्रांजैक्शंस, वो आप मैच करेंगे, वो आप भेजेंगे ट्रेजरी ऑफिस या डीओ ऑफिस या एजी ऑफिस में। एजी जो कि लाहौर के अंदर एजी ही डीओ भी होता है, बाकी सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब की उसमें सब में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस होता है, लाहौर के अंदर नहीं है। लाहौर का एजी ऑफिस ही वहाँ का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस भी एज डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस एक्ट करता है। At the end of each month, the head of the office should personally verify the cash balance and report below the closing entries in the cash book a certificate to that effect over his dated signature specifying both। ये वो वाली बात है जो मैंने कहा कि मंथली क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अब मंथली क्लोजिंग रिसीट वाली साइड पे भी और पेमेंट वाली साइड पे भी, दोनों साइड्स पे नीचे लाइन लगानी पड़ेगी और नीचे अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। In the case of payment into the Treasury, the DDO should compare the Treasury officer's receipt on the challans with the entry in the cash book before initialing it. And when such payments are appreciable, he should obtain from the Treasury a monthly list of payments which should be compared with the posting in cash book। अच्छा, उसमें ट्रेजरी ऑफिस जो है वहाँ उसके चालान्स के साथ आपने मैच करना है महीने के आखिर पे। फॉर एग्जांपल 30 या 31 दिनों का महीना है, तो उसके बाद आपने यकम को दो को जाके वहां से अपनी ट्रांजैक्शंस का, अपने बजट का आपने रिकॉर्ड ले लेना है एक महीने का। और जो जो ट्रांजैक्शन आपके पास कैश बुक में रिकॉर्डेड है उनको मैच करना है। एंड इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट और डिस्क्रिपेंसी, आपने देखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन ट्रेजरी के रिकॉर्ड पे नहीं है या कौन सी ट्रांजैक्शन मेरे रिकॉर्ड में नहीं है। तो आप उसको अपडेट करेंगे, फिर उनसे जाके मंथली लिस्ट लेंगे पेमेंट्स की कि आपने हमारे बजट में से कौन कौन सी पेमेंट्स की हैं। सो वहां से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। When a check is drawn by an officer in favor of self or order to replenish the cash chest, its amount should at once be entered as a receipt. This entry must not be delayed until the money has been received after। अच्छा, जो चेक की फॉर्म में पेमेंट हो रही हैं, जो इम्प्लॉयज को आ रही हैं, किसी का मेडिकल रीइंबर्समेंट का चेक आ गया जी 50,000 का, या किसी का टीएडीए का 26,000 का आ गया है, या उस मतलब डायरेक्टली अगर अकाउंट्स में नहीं आए तो भी उसको चेक की फॉर्म में जब आएंगे तो वो कैश बुक के ऊपर नोट किया जाएगा। All cash transactions should be entered in the cash book
as soon as they occur and attested। अच्छा, डिले किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन जैसे ही हो उसको वो थोड़ी सी देर में ही आप लिख लें, ताकि अगर सेम डे में आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आए तो फिर आप उसको नेक्स्ट सीरियल नंबर के ऊपर लिखें। All receipt disbursements and charges of whatever sort connected with the public service must be and no other may be shown in the cash book। Sufficient details should be given। अच्छा, इसके अलावा जो अगर फाइनेंशियल कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन हो रही है जो जिसमें गवर्नमेंट मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको आप कैश बुक में नहीं लिख सकते। अच्छा, ये रजिस्टर जब हम खोलते हैं तो आपको पता है हमारे सामने दो लीफ आते हैं, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। राइट साइड पे जितनी भी रिसीट्स हैं वो हम लिखते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से या ठेकेदार की तरफ से या किसी रिकवरी की मद में जो भी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, जो हमारे थ्रू गवर्नमेंट की किटी में या गवर्नमेंट की किटी से वेंडर को जानी है, वो रिसीट जो कुछ आप रिसीव कर रहे हैं, दैट शुड बी written on the left side of the register। लेफ्ट लीव के ऊपर आप उसको लिखेंगे, और ये जो ऊपर फॉर्मेट गिवन है, ये कॉलम्स गिवन है कि चेक नंबर है, डेट है, वाउचर नंबर है, जो भी उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो लिखेंगे। फिर पर्टिकुलर्स या पेई के उसके ऊपर पेई कौन है, किसको ये अदा होने हैं, पे अमाउंट कितनी है, या अलाउंस अगर अदर देन पे है, फिर एडवांस पेमेंट अगर एडवांस पेमेंट हो रही है, कोई वेंडर है व्हाट्सएवर, तो वो यहाँ पे लिखनी है। फिर मिसलेनियस जो है इसमें आपने रिमार्क्स लिखने हैं कि ये किस मद में, किस वर्क के अगेंस्ट, किस गुड सप्लाईज के अगेंस्ट ये पेमेंट हो रही है, एंड ऑब्जेक्ट कोड और चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसका कोड कौन सा है। एंड देन राइट साइड पे उसके बिल्कुल सामने उसी महीने के एक्सपेंडिचर होंगे। तो राइट साइड पे एक्सपेंडिचर और लेफ्ट साइड पे आपकी रिसीट साइड होगी। और ये रिसीट का ये दोबारा से वही फॉर्मेट है जी। वही कॉलम्स हैं, डेट, चेक नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, सोर्स क्या है, कहाँ से आया है, पे कितनी अमाउंट है, अलाउंस में भी अगर अदर देन पे है, फिर एडवांस पेमेंट, ये दोनों तीनों हमने लास्ट स्लाइड पे भी देखे हैं। मिसलेनियस रिसीट्स, ऑब्जेक्ट कोड। एक्सपेंडिचर साइड पे भी ऑलमोस्ट यही कॉलम है जी। डेट, चेक नंबर, वाउचर, पर्टिकुलर्स, रिसिपिएंट उसका कौन है, पे अमाउंट कितनी है, अलाउंसेस अगर अदर देन पे है वो क्या है, एडवांस पेमेंट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड ऑब्जेक्ट कोड, ऑलमोस्ट वही। And the last thing we are doing for today is reconciliation of accounts। Reconciliation means to match, मैच करना कि जो रिकॉर्ड हमारे पास है, क्या एजी ऑफिस में या डीओ ऑफिस में भी हमारे बजट का वही रिकॉर्ड है, या कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो हमसे मिस हो गई हैं या एजी ऑफिस से मिस हो गई हैं, ताकि हमारा जो बजटरी कंट्रोल है, जो हमारी बजटरी एक्सपेंडिचर है, वो हमें भी क्लियर हो और एजी ऑफिस को भी क्लियर हो। क्योंकि सिर्फ हम ही स्टेक होल्डर नहीं है कि हमें इतने पैसे मिल गए। जिस ने उस बजट को रिलीज करना है, जिसने वो पैसे हमें देने हैं, उनको उनके पास भी वही रिकॉर्ड होना चाहिए। ये ना हो कि हम हमारा किसी एक खास हेड के अंदर वो गलत रिकॉर्ड की वजह से वो गलत एंट्री हो जाए और फिर बाद में हमारी फर्दर पेमेंट्स ना हो सकें, वो कहें जी कि आपने अपनी सीलिंग से ओवर एंड अबव चले गए हैं। ईच डिपार्टमेंट रेंडर्स इट्स अकाउंट्स टू द अकाउंटेंट जनरल। अकाउंटेंट जनरल को अपने जो अकाउंट्स हैं हर डिपार्टमेंट ने वो जमा करवाने हैं। दीज अकाउंट्स आर कॉल्ड इनिशियल अकाउंट्स अंडर रूल 4 ऑफ द इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट्स रूल्स प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ पीएफआर वॉल्यूम 1। जो कुछ भी हम कॉलेज में अकाउंट्स बनाते हैं उसको हम इनिशियल अकाउंट्स कहते हैं। जो एजी ऑफिस बनाता है या डीओ ऑफिस बनाता है उसको हम सब्सिडरी अकाउंट्स कहते हैं। सो इनिशियल अकाउंट्स शुड बी मैच्ड विद सब्सिडरी अकाउंट्स। The form in which initial accounts are kept, maintained, compiled, and rendered are prescribed by Auditor General of Pakistan (AGP). आर्टिकल 170 में लिखा हुआ है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान would be the final authority के उसका फॉर्मेट क्या होगा जिसमें हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे और कंपाइल करेंगे। कैश ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस एट डीडीओ लेवल इन द ऑफिस डिपार्टमेंट। इसमें सारा जो है वो कैश का अलहदा से आपने रिकॉर्ड रखना है। सिमिलर ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इन एजी डीओ, वहाँ पे भी इसी तरह होता है। अकाउंट्स मेंटेन्ड एट डीडीओ लेवल आर कॉल्ड इनिशियल अकाउंट्स। अकाउंट्स केप्ट बाय एजी पंजाब डीओ आर कॉल्ड subsidiary accounts। Reconciliation of accounts mean entries of all cash withdrawals and payments recorded in
cash book of the DDO are exactly the same or in agreement with the entries recorded by AG or DDO. Reconciliation of TDO's accounts with AGDO's accounts are required under para 13.6 of the budget manual. Budget manual के 13.6 के अंदर reconciliation एक obligatory function है और ये हर महीने होगा. These reconciled accounts are part of annual civil accounts of the province. The annual expenditure accounts are also called appropriation accounts. पूरे साल का जो बजट होता है उसको appropriation accounts भी कहते हैं. Expenditure incurred by the AD against the grants approved by the provincial assembly. और provincial assembly जो हमारा basically बजट जो है वो अप्रूव करती है. Appropriation accounts maintained by the AG are certified by the AGP. अच्छा, ये AG और AGP में फर्क है. AG is Accountant General of the province, जबकि AGP जो है वो Auditor General of पाकिस्तान है. ये उन अकाउंट्स का ऑडिट करता है और इन अकाउंट्स का ऑडिट को सर्टिफिकेशन ऑडिट कहा जाता है. दैट्स वाई सर्टिफिकेशन या सर्टिफाइड की टर्म इस्तेमाल होती है. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फिर बाद में ये रिपोर्ट्स भेज दी जाती हैं बाय AGP, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान. Public accounts committees of the provincial assembly deals with the appropriation accounts of the government and the reports of the auditor general thereon under rule 177 of the rules of procedure of the provincial assembly of the Punjab. DDO has also uh, uh, the cap or the responsibility of internal auditor and is responsible to get his accounts certified and audited from the Auditor General of Pakistan. जब भी ऑडिट टीम आएगी उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको रिकॉर्ड फराहम करना, उनकी क्यूरीज का जवाब देना, उनके ऑडिट पैरास के जवाब कंपोज करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DDO. Reconciliation of accounts of DDO with that of AG or DO is must for legislative overview as PAC considers and accepts only the accounts prepared by the AG. अब रिकन्सिलिएशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपके जो बनाए हुए अकाउंट्स हैं जिनको हम इनिशियल अकाउंट्स कहते हैं या DDO के जो अकाउंट्स हैं उनको सर्टिफाई नहीं करता AGP. हाँ, AGP मैच के लिए आपके पास आपको ऑडिट जरूर करता है बट सर्टिफिकेशन ऑडिट जो है वो AG के बनाए हुए अकाउंट्स का होगा. दैट्स वाई AG ऑफिस के अकाउंट्स को वही कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो आपके अकाउंट्स में है. दैट्स वाई reconciliation is important. Of the state transparency expenditure maintained by executive and its submission to legislative precedence. Reconciliation of accounts helps checks misclassification in AG पंजाब या DO ऑफिस के अंदर अगर उनसे कोई गलती हुई है तो रिकन्सिलिएशन में वो सामने आ जाती है. रॉन्ग बुकिंग इन AG DO ऑफिस, एम्बेसी लीकेज, मिस अप्रोप्रिएशन कहीं पे भी हुई है किसी लेवल पे तो वो पता चल जाती है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम the questions so that our discussion would benefit us more and more. जी, नो क्वेश्चन. ये काइंडली जो कोऑर्डिनेटर हैं आई थिंक हैंड रेज कर रहे हैं एक दो लोग, उनका माइक ऑन कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर, ये जो ग्रांट्स एलोकेट की जाती हैं पॉलिटिशियंस की तरफ से, इसका ऑडिट भी किया जाता है जो डिफरेंट कॉलेजेस को ग्रांट दी जाती है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है. DDO की तरफ जी जी, आपका यही क्वेश्चन है या इसको फर्दर इसको आप सर, ये क्वेश्चन है कि DDO ही उसको भी लुक आफ्टर करेगा या फिर उसके कोई और ऑडिट का होता है इसमें? जी होता ये है कि जब किसी पॉलिटिशियन ने विजिट
किया कौन सा ये नया ब्लॉक बनेगा या कुछ और होगा, तो वो फाइनेंस को लिखेंगे कि जनाब इन इस कॉलेज को या इस इंस्टीट्यूशन को इतनी ग्रांट दे दी जाए। उसका आपको लेटर आएगा एक फाइनेंस की तरफ से, फाइनेंस भेजेगा एचईडी को, एचईडी आपको भेज देगा, उसके ऊपर ना उसकी डिटेल अस्सलाम लिखी होगी वालेकुम। कि ये कौन सा ग्रांट कोड है, कौन सा हेड आप यूज करेंगे फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस। सो पैसे तो प्रैक्टिकली एजी ऑफिस के पास ही रहेंगे, और आप बस उसका बिल बना के भेजेंगे। बिल में जो ग्रांट नंबर होता है वो आप वो यूज करेंगे जो आपको फाइनेंस बताएगा। सो ये सारा प्रोसेस डीडीओ के थ्रू ही होगा, जिस तरह से वो नॉर्मली बाकी तमाम ट्रांजैक्शंस को या बिल को प्रोसेस करता है, ये भी वैसे ही होगा। जी जी अस्सलाम नेक्स्ट। वालेकुम। वालेकुम सर। मैं जी शफक जाफरी बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट जमींदार ग्रेजुएट कॉलेज गुजरात से। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो आपने ड्यूरिंग लेक्चर बताया है कि 1 लाख तक का अगर बिल है तो वो मतलब ड्रॉ करवाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल डीडीओ के थ्रू। तो उससे अगर 2 lakhs में वो चला जाए तो उसको वो बिल को ब्रेक कर लिया जाता है बाजुकात, जो बाद में ऑडिट में इशू करता है। तो क्या फिर ज़्यादा बेटर ये है कि इसके लिए जो 2 lakhs का अगर बिल है तो वो 2 lakhs में ही रहने दिया जाए, उसे ब्रेक करने के बजाय, और बाद में जो है वो उसको हायर अथॉरिटी से जो है वो करवाया जाए सेंक्शन? ये ज़्यादा अ, बेटर फेवरेबल सिचुएशन है। जी मिस शफक, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये सिर्फ हायर एजुकेशन का नहीं, ये तमाम डिपार्टमेंट्स का यही मसला है। मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बताऊं, 3-4 महकमों में नौकरी करके हर जगह पे यही अनफॉर्चुनेटली पोजीशन है, और बाद में ऑडिट की प्रॉब्लम्स भी इन्हीं वजह से बनती हैं। जो ऑफिशियल प्रोसीजर है वो यही है कि हर जो बीपीएस है, हर स्केल है, उसकी फाइनेंशियल पावर बताई गई है, ऑलरेडी डिफाइंड है कि कितनी अमाउंट तक की जो है कौन कर सकता है। सो लिहाजा बिल को ब्रेक ना किया जाए ऑफिशियली, या जो उसका आइडियल सिनेरियो है वो यही है कि टोटल बिल को उस सैंक्शनिंग अथॉरिटी तक पहुंचा दिया जाए जिसकी अमाउंट में वो लाई करता है, और उससे सैंक्शन ले ली जाए। तो देर इज सही। नो प्रॉब्लम इन दैट। सिर्फ हम टाइम बचाने के लिए, सिर्फ उसको शॉर्टकट करने के लिए हम ये रास्ता इख्तियार करते हैं, एंड अल्टीमेटली हमारा इंस्टीट्यूशन उससे सफर करता है। बाद में फिर ऑडिट पैराज के कौन जवाब दे एंड ऑल दैट, वो प्रॉब्लम्स होती हम्म। अच्छा, सॉरी मैंने मेरी नज़र से नहीं गुजरी, क्या कोई ऐसी स्लाइड भी इसमें है लेक्चर में कि जिसमें मतलब वो लिमिट्स बताई गई हैं कि एक कॉलेज प्रिंसिपल जो है वो किस स्केल का, मतलब 17 का अगर डीडीओ है या 18 का डीडीओ, तो वो किस लेवल तक अमाउंट जो है वो करवा सकता है, और अगर नहीं तो फिर उसके बाद डीडीसी या डायरेक्टर या हायर अथॉरिटीज, ज़ाहिर है यही बनती है हमारी, तो इनमें से कोई जो है वो कितनी रेंज तक जो है वो सैंक्शन दे सकता है? इस तरह की मेरे ख्याल स्लाइड, आई थिंक सो दैट, नहीं मेरी नज़र से नहीं गुजरी, ऐसा ही है। जी आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, बट आपने मेरी एक बात मिस कर दी। वो बात ये थी कि मैंने उसमें उन रूल्स का हवाला दे दिया है जिसके अंदर वो सारा गिवन है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। सही है। और इसमें डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, वो आप नेट पे भी सर्च करेंगी ना, 2016 के पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स हैं, डेलीगेशन ऑफ जी फाइनेंशियल पावर रूल्स उनको कहते हैं। वो आप जी सही। जाएं उसमें, उसके जो सेकंड पार्ट है, पार्ट 2, उसके अंदर आप जाएंगी तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके स्केल वाइज गिवन है कि किसकी कितनी अमाउंट है और किस स्केल का बंदा कितनी उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। ठीक है जी जी। थैंक यू, थैंक यू। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो ये जी है जी कि अच्छा। अगर कोई चेक जो है वो बनाया गया है 1 लाख से कम अमाउंट का है, ठीक है, जी फॉर जी। एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे बताती हूँ कि मैं जमींदार कॉलेज में डीडीओ पावर्स तो नहीं मेरे पास, लेकिन मैं एज अ लाइब्रेरी इंचार्ज काम कर रही हूँ। अब हम्म। लाइब्रेरी की हमारी जो चीज़ें, जो कुछ भी मंगवाना होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लीनलीनेस के लिए सामान आ रहा है या पानी की बोतल वगैरह आ रही है, तो इसका जो है ज़ाहिर है एज अ इंचार्ज एप्लीकेशन मैं उसको मूव करती हूँ। अब जो चेक बनता है, क्या वो प्रिंसिपल के नाम बनना चाहिए या वो डायरेक्ट मेरे नाम बनेगा और मैं उसको मतलब ड्रॉ करवा के तो जो भी है उस तक दूंगी, या जिसके नाम जिससे हम चीज़ वो बाय कर रहे हैं, क्योंकि अमाउंट कम होती है ज़ाहिर अक्सर। तो इसमें थोड़ा सा मुझे क्लियर एक बताइएगा। बाज़ औक़ात नाइब कासद तक के नाम के चेक बन जाते हैं कि भाई वो ड्रा करवा लेगा।
क्या ये जी जी, ये दोनों तीनों चीजें अगर स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, ये उसमें हमने डिस्कस की हुई है। 1 लाख से कम की अमाउंट है तो उसमें आइडियल सिनेरियो ये है कि आप उसको हम्म, कैश में ले, डीडीओ के नाम हम्म, चेक बने, डीडीओ उसका कैश ट्रेजरी ऑफिस से ड्रॉ करवाए, और हम्म, वो पेमेंट जो आप जिस प्राइवेट सप्लायर से आपने ली है उसको पे कर दे। 1 लाख से ऊपर जाएगा तो फिर क्रॉस चेक की लिमिट आ जाएगी, और क्रॉस चेक रिसीव तो डीडीओ करेगा यानी प्रिंसिपल हाँ, करेगा। उसमें आप आपका नाम कहीं नहीं आएगा। आप लाइब्रेरियन हैं तो आपका डीडीओ यानी जो आपका प्रिंसिपल है वही बेसिकली इस सारी डीलिंग में इन्वॉल्व होगा। तो सही, उसमें यानी चेक जो है वो प्रिंसिपल के नाम का ही बनना चाहिए, चेक प्रिंसिपल किसी के और नाम का एम्प्लॉय के ही नाम का नहीं बनना बन चाहिए। सकता। जी हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो जो और एम्प्लॉई है वो आप भी हो सकती हैं, वो नाइब कासिद हो सकता है। उसके अंदर एक प्रोविजन दी गई है कि जो अथॉरिटी अथॉरिटी लेटर के साथ वो जा सकता है, कि प्रिंसिपल साथ एक लेटर लिखेगा कि मैं इस बंदे को मेरी अथॉरिटी पर ये चेक रिसीव कर सकता है। चेक जो है वो डीडीओ के नाम पे ही बनेगा, प्रिंसिपल के नाम पे ही बनेगा, लेकिन उसको रिसीविंग के पर्पज के लिए कोई और बंदा वो हम्म, ले सकता है। सही, लेकिन अगर इट्स मीन कि इधर चेक्स पर्सन वाइज बन रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम पे बन रहे हैं, तो कल को ये ऑडिट में इशू क्रिएट कर जी सकती है ये जी चीज़। जी जी, ये ऑडिट पैराबाद में बन जाएगी। जी, ठीक है जी, सही हो नेक्स्ट गया जी, Assalamu क्वेश्चन। alaikum, थैंक यू sir. वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम Assalamu सलाम। alaikum, sir. Sir, there are some colleges where DDOs are working. They are not regular principal. But when they sign the documents, they use the stamp with designation of principal. Is it legally justified, sir? Yes, when the regular incumbent is not there, the regular posting of principal is vacant and somebody is working as principal. So ultimately, he would be responsible for all the financial transaction, and he can use that the designation of principal with the stamp. अस्सलाम सर। Thank you, sir. अस्सलाम Thank- वालेकुम सर। जी 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 वालेकुम हसन। सलाम। सर एक डीडीओ के लिए हेलो जो प्रिंसिपल्स होती हैं उनका एक जी अलाउंस होता हसन। है जो कि उनको पर मंथ मिलता है, और उसका नाम शायद एंटरटेनिंग अलाउंस है या समथिंग लाइक दैट। इफ समवन इज वर्किंग एज अ डीडीओ तो क्या वो वाला अलाउंस उसको भी मिलेगा? नहीं, उसको नहीं मिलेगा। वो रेगुलर इनकम्बेंट को ही मिल सकता है। ये आज से कई साल पहले ये वाली क्लैरिफिकेशन मैंने कहीं पढ़ी थी, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस वो स्केल के हिसाब से होता है। जब प्रिंसिपल जो है वो काम कर रहा है ना, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है फॉर विजिटर्स, के जो विजिटर्स आते हैं उनको चाय पानी पिलाने के लिए, जो इस तरह का है उसको एंटरटेनमेंट। वो एक 4000 की अमाउंट है फॉर द जी जी प्रिंसिपल्स। और आप ये देखें कि वो 4000 कितनी एक लेस सी अमाउंट है। तो जब एक बंदा डीडीओ के तौर पे काम करता है फॉर मोर देन 6 मंथ्स लाइक अराउंड अ ईयर, तो क्या उसको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो भी उसको मतलब उसको वो दिया जाए? तो ये ऐसा क्यों है? मतलब आप काम लेते हैं, आप सारा कुछ करते हैं, आप जी ड्यूटीज़ डबल करते हैं। मैंने एज अ डीडीओ काम किया मोर देन 10 मंथ्स, और उसमें आई वाज टीचिंग एज वेल एंड एज वेल, और दोनों में साथ में डीडीओ के तौर पे भी काम करी थी, पूरा कॉलेज भी संभाला। और आपको उसके रिवॉर्ड में क्या मिला है? तो इस तरह से तो देखें। फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं, उनके लिए लोग इतने विलिंग नहीं होंगे कि आपकी जो मतलब आप डबल ड्यूटी असाइन कर देते हैं एक बंदे को, लेकिन फिर उसका रिवॉर्ड भी कोई नहीं मिलता। देखिए, ऐसे भी लोग होते हैं कि उनके पास दो दो कॉलेजेस का भी चार्ज समटाइम मिल जाता है, कि वो अपना कॉलेज भी देख रहे होते हैं, दूसरा कॉलेज भी देख रहे होते हैं। अब जो हमारी गवर्नमेंट सर्विस है ना, इसको आपने एज रिवॉर्ड नहीं देखना, इसको एज रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना है। अब जो जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो ऑब्वियसली एक खास उसके तहत बनाया गया है, और जाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम पैसा डी वैल्यू हो रहा है। आज से मतलब 1800-2000 रुपये अगर मेडिकल अलाउंस आपको मिलता है, तो 1800-2000 में तो आप किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते। आपका कन्वेंस अलाउंस है, उसके ऊपर भी आप बात कर लें तो हमें यही जी जी, लगेगा कि बिल्कुल इस ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस छुट्टियों में कट कन्वेंस जाता है जी। जी, और हम इस जा रहे कन्वेंस होते हैं अलाउंस कॉलेज। में तो आप मतलब आपके जो फ्यूल की जो सिचुएशन है वो कवर तो नहीं करता हमारा कन्वेंस अलाउंस उसको। लेकिन इवन सर वेकेशंस में आप देखें, हम बहुत दफ़ा जाते हैं, मतलब अगर हमारी अटेंडेंस भी चेक की जाए कॉलेजेस के रजिस्टर में, तो इस तरह की अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें कि स्टाफ को टाइम टू टाइम कॉल किया जाता है, एंड वी आर सपोज टू गो, और हम जाते हैं, हम कभी भी हेजिटेंट नहीं होते। लेकिन जी हमारा लेकिन
लेकिन कट वो जो जाता एडिशनल ड्यूटी होती है उसका आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है। Kindly नहीं मिलता। take question. Give जी some टाइमली other नहीं मिलता, person. लेकिन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। sir. जी वालेकुम सलाम। Sir, this is Dr. Sunaira सर Sundar. मैं आप मेरा एक क्वेश्चन एक जी माइक ऑन करें एट अ टाइम ताकि। जी सर। सर जी मेरा जी क्वेश्चन please। ये है कि आपने इनिशियल सब्सिडियरी अकाउंट्स का और उसके बाद उनकी रिकंसिलिएशन का बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक माय डिपार्टमेंट एंड थैंक यू फॉर दिस इंसाइटफुल लेक्चर। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत कुछ सीखा है इससे। सर मेरा सवाल ये है कि ये इन दोनों की जो रिकंसिलिएशन है उसके लिए जो सब्सिडियरी अकाउंट्स का मैनेजमेंट है वो डीएओ ऑफिस ही करेगा जाहिर है। तो क्या हम जो जो हमारे पास एक्सपेंडिचर्स होते जाएंगे हमें साथ साथ एजी ऑफिस को या जो डीएओ ऑफिस है उसको इन्फॉर्म करना होगा, रिसीट्स भेजनी होंगी वहां पे? आप किस डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हैं? सर डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से। रावलपिंडी से, ठीक है। अच्छा, लाहौर में तो एजी ऑफिस चलेगा, रावलपिंडी में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस चलेगा। तो आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसके जब आप इनिशियल अकाउंट्स बना लेंगे उसके नीचे आप लाइन लगा के सर्टिफिकेट एक एक ट्रांजैक्शन को टिक लगा के चेक कर लेंगे। तो फिर आप मंथ एंड के ऊपर ट्रेजरी ऑफिस और एजी सॉरी डीईओ ऑफिस इनके साथ रिकंसिलिएशन करेंगे। इनसे अपना बजट का एक महीने की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड लेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि कहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ रही है। तो वो जो सब्सिडरी अकाउंट्स के साथ आप वो करेंगे तो महीने के आखिर पे आपको अपनी कोई डिस्क्रिपेंसी, एरर, गलती, अमाउंट, नेम में मसला, कुछ भी वो मिल सकता है। तो दैट इज द थिंग जहाँ पे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ऑडिट उनका ही होना है, उन आपके सब्सिडरी अकाउंट्स का ही होना है, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल कि अगर उसके अंदर कोई गलती रह जाती है, कोई कमी या बेशी, दोनों सूरतों में वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसमें करेक्ट करवाएं। क्योंकि जब 30 जून को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसमें करेक्शन नहीं हो सकेगी। थैंक यू जी वेरी सर, मैं मच। यहाँ पे ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो अभी इन्होंने क्वेश्चन किया है। जी इसमें जो हम नॉर्मल ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं अपने कॉलेज के अकाउंट से मंथली बेसिस पे, उनकी हमें रिकंसिलिएशन नहीं करवानी होती, बल्कि जो हमें एजी ऑफिस फंड रिलीज करता है उसकी करवानी होती है। ये थोड़ा सा जी डिफरेंस है मेरा ख्याल है यहाँ पे कि जी जो जी जी कॉलेज हम फंड में पैसे हम आ चुके हैं उनकी रिकंसिलिएशन नहीं होती। जो आपके आए हैं, अगर किसी मंथ में आपको कोई फंड नहीं रिलीज हुआ तो फिर आपकी रिकंसिलिएशन नहीं होगी। जी ओके थैंक यू सो मच। जो आपका बजट है ना, जो I एजी ऑफिस के थ्रू बजट आपको मिलता है, बजट उन्हीं को आपने रिकंसाइल करना है। उसके अलावा अमाउंट्स को आपने रिकंसाइल नहीं जो करना। सर जो मंथली हमारा आपको लोकल एक्सपेंडिचर है वो बस हम खुद ही खर्च उसको करने होते हैं देखेंगे। उससे नहीं करना। जी जी ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं समनाबाद कॉलेज से अस्सलाम बात वालेकुम कर रही सर। हूँ, नौरीन रियाज। जी जी सर आपसे एक बात पूछनी थी कि अगर आपको जो बजट ग्रांट हो गया है, आपने किसी मद में दोबारा से कोई बजट लेना है, जैसे कि अगर जी जी प्लांटेशन है कॉलेज में, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा ग्रीन बेल्ट और ग्रीन सारा ट्री प्लांटेशन का कहा जा रहा है, तो आप बजट में से इतने सारे पैसे नहीं निकाल सकते। पिछले दिनों जी जी जैसे वेजिटेबल जो था किचन गार्डनिंग के रेफरेंस से जो था वो काफ़ी सारा था और उसमें लिखा गया था आप कॉलेज बजट में से ही जो है उसको करें। तो कॉलेज बजट जो था वो तो इतनी सारी पेमेंट को जो है वो नहीं सहारा दे सकता, ना सपोर्ट कर सकता है। तो क्या उसके लिए हम बजट दोबारा से दरमियान में जो है वो उसकी कोई रिक्वेस्ट भेज सकते हैं? क्या उसका कोई PC1 बनेगा, उसका आगे से कुछ हमें बजट मिलेगा भी, या उसको कैसे करना होगा? ये मुझे थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हमारे कॉलेज में हमें प्लांटेशन का जो टास्क मिला हुआ है तो हमें उसमें बहुत सारे पैसे जो हैं वो नहीं इस तरह मिलते। तो हमारी प्रिंसिपल माशाल्लाह जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा इसमें कर रही हैं, उन्होंने जी बहुत जी सारा अपना यूज़ किया है। तो मैं ये चाह रही थी कि कोई ऐसा जी है मैं तरीका समझ कि हम गया, बजट मैं मिल जाए। आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। इसको कहते हैं एडिशनल फंड्स क्लेम करना। इसमें आप एडिशनल फंड्स क्लेम करेंगे और एडिशनल फंड्स का जो प्रोसीजर है वो आपका बजट मैनुअल नाम की एक किताब है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। पंजाब का जो बजट मैनुअल है वो आप डाउनलोड कर लें, उसमें PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। वहाँ एडिशनल फंड्स के जो चैप्टर है या सब चैप्टर है उसके अंदर आप जाके देख लें कि एडिशनल फंड्स को क्लेम करने का, रिक्वेस्ट करने का क्या प्रोसीजर है। उसके अंदर उसका परफॉर्मा भी गिवन है।
जो परफॉर्मा आपने फिल करना है ना कि आपको किस मद में चाहिए, कितनी अमाउंट चाहिए, ऑलरेडी आपको कितनी एलोकेशन हुई है और एडिशनली कितनी चाहिए। तो ये प्रोसेस होता है। ये कुछ जगहों पे तो बिल्कुल अगस्त में जब बजट आपके पास आ जाता है, अगस्त सितंबर में ही कर दिया जाता है, वरना ज्यादातर जो इदारे हैं वो जनवरी में ये करते हैं। जहां उन्हें लगता है कि उनका फंड कम हो रहा है, वो जनवरी के बाद जून से पहले पहले तक उसको मांगते हैं एडिशनल फंड्स। ठीक है, वो प्रोसीजर आप देख लीजिएगा वहां पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। Question, My please, name is sir. डॉक्टर नाजिया कंवल फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चौकाज़म। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक डीडीओ है और उसका 6 मंथ की जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो गई है और उसने अपनी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उसको वो एक्सटेंशन की जो है वो अभी वो पेंडिंग जा रहा है, वो डे यानी उसे एक्सटेंशन नहीं मिली। तो क्या वो उस दौरान अपने अकाउंट्स की यानी अपने फंड की ट्रांजैक्शन करवा सकता है या वो कॉन्टिजेंसी को जो है वो यूटिलाइज कर सकता है, फंड को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता? तो सर काइंडली इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने ये कहा कि वो जब तक उसकी एक्सटेंशन नहीं हुई तब तक वो फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर सकता। और हाँ, कंटीजेंसी को वो यूज कर सकता है, बट एक्सटेंशन के लिए अगर टाइमली जो है वो कर लिया जाए कोऑर्डिनेट या उसकी कोरेस्पॉन्डेंस कर ली जाए तो फिर ये केस नहीं होगा। नॉर्मली ये होता है कि जब एक्सटेंशन खत्म हो जाती है तो हम लिखते हैं डिपार्टमेंट को जी कि जनाब अब हमारा फर्दर पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये डिले आता है। तो जब तक वो उसका जवाब हमें नहीं मिल जाता तब तक हमने सिर्फ उसको कंटीजेंसी को हम प्ले कर सकते हैं, हम फंड्स को नहीं छेड़ सकते। लेकिन सर यहाँ लिया वाली साइड पे यानी मैंने अभी न्यूली अपॉइंटेड हुई हूँ एज अ डीडीओ, तो मेरे से जो एक्स डीडीओ थी वो उनको एक्सटेंशन नहीं मिली हुई थी लेकिन फंड से कंटिन्यूअसली पैसे निकल रहे थे। जी उसमें फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बाद में ऑडिट में ये इरेगुलर पेमेंट्स हो जाती हैं एंड देन उसके और बड़े मसाइल हैं। सो ओवरऑल प्रिंसिपल तो यही है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये है कि इरेगुलर पेमेंट्स होती ठीक हो हैं। गया और सर। सर मुझे ठीक है क्लियर जी। हो गया, मैं बस को क्लियर करना चाह रही हूँ। शुक्रिया सर। जी थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक लास्ट शफीक जाफर इज हियर। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है एज अ मैडम स्टूडेंट, आप जस्ट जमींदारा लास्ट कॉलेज से क्वेश्चन। है ना? जी जी। ठीक है ठीक है। जी बताइए। अच्छा, एज अ स्टूडेंट अपने टेस्ट के हवाले से, क्या आपने ये जो वॉल्यूम नंबर्स और रूल नंबर्स लिखे हैं, क्या जी ये भी प्रिपेयर करने लाजमी है? इनके हवाले से भी एमसीक्यूज हो सकते हैं? नहीं नहीं, ये किसी क्वेश्चन में मैंने नहीं डाले रूल्स या किसी बुक के बारे में नहीं पूछा। जो आइडियाज हमने पढ़े हैं हम सिर्फ उन आइडियाज के बारे में हैं, और कॉन्सेप्ट्स। वो भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। वो जब पेपर आएगा तो आपको खुद ही, अगर आप स्लाइड सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ लें, सो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस तो हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इस दफ़ा कह रहे हैं कि आपको केस स्टडी दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली आप फिर उसको आपने सॉल्व करना होगा, सब्जेक्टिव पेपर भी होगा, तो इससे नहीं, मेरे रिलेटेड मेरे मेरे पेपर में ऐसा नहीं है। मेरे पेपर में एमसीक्यूज ही होंगे फिलहाल तो। जो है केस स्टडी मेरे तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। चलिए ठीक है। थैंक यू सर। जी Said from Nishad. जी सर प्लीज। सर मेरा एक तो सबसे मेन चीज कि ये जो आपकी प्रेजेंटेशन थी ये बहुत अच्छी थी और ऑर्गेनाइज थी, लेकिन आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं कि फाइनेंशियल डीलिंग्स इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इतनी डाइवर्सिफाइड हैं कि उसको एक प्रेजेंटेशन एक टॉपिक में कवर नहीं किया जा सकता। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूं कि जिनको भी प्रिंसिपल की या डीडीओ की सीट दी जाए तो प्लीज प्लीज डिपार्टमेंट इस चीज को इंश्योर करे कि उनको फाइनेंशियल डीलिंग की एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाए, उसको ट्रेन करें, उसके बारे में पूरा ब्रीफ करें और फिर बताएं। फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये कि ना आप ये बताएं कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कॉलेज में बच्चों की जो फीसें जमा हो रही होती हैं उनको डायरेक्ट बैंक से लिंक कर दिया जाए? हमारे फीस को वो डायरेक्ट क्लियर होते हैं एंट्रीज और प्रिंसिपल
गलत एंट्री उनको, और फिर कलर्स को भी नहीं आ रही होती, आती हैं या नहीं आती। जी सॉरी, आपकी आपकी आवाज कट रही है मुसलसल। मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि जो बच्चों की फीस है, उसके बाद मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, अब मैं दोबारा रिपीट कर जी कि जी। तो एक अकाउंट में अगर डायरेक्ट जमा करवाने के लिए इदारों को फैसिलिटेट कर दिया जाए और प्रिंसिपल्स को इस सिलसिले में गाइड किया जाए और अरेंजमेंट्स करवाई जाएं, तो उसमें क्या करना चाहिए ताकि क्लर्कों की डिसीव से बचा जा सके, नंबर 1, और नंबर 2 फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट से बचा जा सके। क्लर्क्स करप्शन करते ही हैं। अच्छा, जो पहला आपने बात की है वो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये इस आइडिया को अब हर जगह पे फील किया जा रहा है कि जहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, सो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट्स प्रोसीजर्स हमें नहीं पता होते, या इवन कि एक बंदा जब तक प्रिंसिपल नहीं बनता, चाहे वो उसकी जितनी भी सर्विस है उसका वास्ता नहीं पड़ता फाइनेंशियल मैटर्स के साथ, और अचानक से जब उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सो ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं और वो रिलाई करना शुरू कर देते हैं कि अकाउंट्स वाला जो बंदा होता है वो ही सारा कुछ, वो बादशाह बना होता है और वो सारे मामला वही कर रहा होता है, और वो बेचारा जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ सिग्नेचर्स कर रहा होता है कि भाई तुमने देख लिया ना, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, वो साइन कर देता है वो। इस तरह की जो ट्रेनिंग है, ऑब्वियसली जैसे अभी हमारा एक सेशन हुआ, आपके क्वेश्चन आंसर हैं, तो मैं इसको और रिफाइन कर दूंगा, कोई और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो नेक्स्ट ट्रेनिंग्स होंगी उसमें वो बेनिफिट होगा, या अल्टीमेटली इसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं फाइनेंस की। मतलब मेरे पास अपने पास इतने लेक्चर्स बने हुए हैं और सारे फाइनेंस से रिलेटेड हैं, उस कभी किसी एस्पेक्ट के ऊपर, कभी किसी एस्पेक्ट के ऊपर। सेकेंडली, जो आपने क्वेश्चन किया ये फीस से रिलेटेड, अब इसमें मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो जो अकाउंट से लिंकिंग का है उसके अंदर एम्बेजलमेंट का है। आई वॉज इन रेलवेज एंड जो ऑडिट रिपोर्ट सबसे पहले मैंने रेलवेज की बनाई तो वो एजुकेशन की थी, और उसके अंदर इसी तरह से था कि जो डायरेक्टर एजुकेशन और ये एडमिनिस्ट्रेशन थी, इन्होंने उसको प्राइवेट अकाउंट्स में रख के, तो उसका जो कितने महीनों तक, 6 महीनों तक उसे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा ही नहीं कराया, और उसकी जो इंटरेस्ट था वो उन्होंने खुद साइड पे कर लिया, 6 महीने बाद वो चालान के ऊपर वो सारी अमाउंट कर ली। सो ये बताने का मकसद ये है कि एम्बेजलमेंट या फ्रॉड का एलिमेंट वहाँ पे भी है, इसलिए दैट वोंट सर्व द पर्पस कि उसमें हमें अकाउंट की इजाज़त दे दी जाए तो हम इसको ज़्यादा बेहतर जो है मैनेज कर सकेंगे, वहाँ पे भी इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बेजलमेंट होगी। सो दैट इज़ द राइट वे कि वो पैसे वहाँ पे जमा हो रहे हैं गवर्नमेंट के पास, तो लेट इट बी। ठीक है जी। जी, हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है। कोई और फास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज वी सर शुड फाइंड कॉल अप इट। कीजिएगा प्लीज सर। सर फाइंड अप जी कीजिएगा प्लीज। जी 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 जी। चले जी, ठीक है। मैंने स्लाइड शेयर कर दी हैं, आप लोगों को स्लाइड्स मिल जाएंगी। जो पेपर है इसी के अंदर से होगा, तो बाकी अगर फिर कोई क्वेश्चन हो तो मेरा ईमेल एड्रेस एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।
पार्टिसिपेंट प्लीज वेट कीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसमें डिले हो रहा है।
लेकिन मैम वही कॉल वाला इशू प्रेजेंटर में बन ही नहीं रहे। मेगा सिंगर ओके जी मैम ट्राई कर रहा हूँ मैं। जी बिना कमरा आ गया वो पीछे क्या काम के अंदर अंदर मुझे बांधने में बैठ सकते हैं। काम क्या है काम क्या है? अस्सलाम वालेकुम हसन, मीटिंग में हैं आप? जी मैं मीटिंग में हूँ। किस मैं नेम ऑडिबल से हैं हमारे नेक्स्ट जो हैं? जी प्रोफेसर जी, रुबीना आवाज कमाल। आ रही है। ओके।
अस्सलाम हसन मैम से कहिए एक दफा रिज्वाइन कीजिए, रिज्वाइन करें वो। जी ओके मैम। उनको कॉल पे लें और उन्हें क्या रिज्वाइन करें अपना सेशन। मैं सेटिंग्स देख रही हूँ। कर रहे हैं मैम। जी मैम ने ज्वाइन कर लिया मैम। हाँ जी मैम से कहें चेक कीजिए अपनी साइड से मैम रुबीना कमाल। जी हसन, can you hear me? Am I audible? Yes ma'am, yes ma'am, I'm with you ma'am. You are audible ma'am. Have you enabled camera? Yes ma'am, you are also visible ma'am. Okay, and have you connected this share slide? Ma'am, you can share by yourself ma'am. Okay, wait. Just let me know Yes if it's ma'am, visible. visible है आप। Yes ma'am, Okay. आपकी स्क्रीन विजिबल है और करंटली आपने जीमेल अकाउंट ओपन किया हुआ है शायद। Can you see the slides? Down, yes. Up, down. Can you see the slides? Yes ma'am. Yes ma'am. My camera is visible? Yes ma'am, visible ma'am. Your slide visible. You may continue ma'am. Okay. Now, good afternoon, dear participants. Their mics are in mute. Yes ma'am, all participants are muted ma'am. Okay. Well, participants, good afternoon. Here we are with our next lecture, and that is about the curricular and the co-curricular activities. Slides are once again gone.
Well, it may sound a little different sort of a topic because till now you have been dealing and studying with financial issues and other financial matters. So in this context, this topic, managing curricular and co-curricular activities, would seem like a breeze to all of you, because it is somewhat a literary topic, and this is something that is a very important part of any administration in the college side. Well, I would like to share with my participants what is their idea about curricular and about co-curricular activities. To begin with, I would like to know, what do they think, what are curricular activities? Please unmute their mics. Anyone from participants would like to say something? What do they understand by the curricular activities? Ji Hassan, please unmute their mics. Is it possible? Yes, ma'am. Gigi, please unmute their mics. Let me see what they say. Okay, ma'am. Can you disable the camera? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैं गुजरात से शफक जाफरी अर्ज़ कर रही हूँ। जी जी। करिकुलम जो है वो सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको पॉलिसी के तौर के तहत गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, जो आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जिसे एक ख़ास टाइम में मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। लेकिन को-करिकुलर No, एक्टिविटीज़ जो हैं, I just want I just want you to say something on curricular first. We'll go to the ओके co-curricular in the second यू part कैन of से the दैट के lecture. दैट वाज अ पाथ, वो एक रास्ता है जिस पे चलते हुए आप जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते हैं, वो करिकुलम आपका कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम और से मैम। रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी विद इन क्लासरूम आप एक सिलेबस को कवर करने के लिए करते हैं। Okay, right. अस्सलाम वालेकुम मैम। Good attempt. जी वालेकुम सलाम। राबिया और हयात लाहौर से बात कर रही हूँ। जी। करिकुलर अगर प्रिसाइजली मैं उसको कहूँ तो वो जो स्टूडेंट्स खुद चूज करते हैं डिसिप्लिन, हर डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी जो आउटलाइंस होती हैं, उनको मेरे ख्याल में उनको जो मीट हमने करना होता है ना, वो करिकुलर होगी। Okay, right, good. Both of you are right. Okay, to begin now, it's enough. To now to start with, you are right that you people have got some idea about what are curricular and activities. We'll go to the co-curricular activities in the second part of the lecture. Right now. भी हैं, ठीक है, गाना चीखना नहीं शुरू कर दे क्या? नहीं, कभी जरूरत है क्या आपने कहा? It's Iza Javed from Faisalabad. Madam, co-curricular activities are those which happen outside the classroom settings, like debates or any other activities apart from the studies. The activities in which students participate, they are called co-curricular activities. Okay, right. Okay, please, Hassan, unmute the mute the mics now. Mute the mics so that I can start my lecture. You're right. Okay, ma'am. Okay, मैं कर देती हूँ। Gigi, participants, you are right. You have got some idea about what are curricular activities. Now, curricular activities, as you all have some idea, are those activities that we undertake in order to complete the curriculum that is given to you of a specific subject or discipline. Whatever subject you are teaching, the curriculum that is given to you as prescribed by the textbook board,
we are supposed to teach that curriculum, and in order to complete the teaching of that curriculum, the activities that you undertake in your classes are called curricular activities. So an overview is balanced approach to curricular and co-curricular activities, and purpose is to provide strategies and best practices for effective management of both type of activities. Now, curricular activities, to begin with, activities that are part of the academic curriculum. As I just told you, all those activities that we undertake in order to uh, teach and complete our academic curriculum. And the examples of some of these activities are lectures, labs, examinations, assignments, projects, and there can be so many more, like parent-teacher meetings. All these activities are the curricular activities that help us to teach the curriculum to our students. And the objective is that the academic development and subject mastery of the students can be fulfilled. Now, participants, you can see in the slide that there are some of the pictures that are taken from my own institution, right? Except the middle one, that is just a generic picture in order to make you understand the concept of curricular activities. These pictures on the right and the left are from my own institution, and I have taken these pictures so that uh, you people can see that even in higher education department, even in our public sector colleges, these activities are going on with full bloom, and our public colleges are also undertaking all these activities. In order to make you relate with the concept, I have taken these pictures so that we won't say that these are the international level institutions and these pictures are generic pictures. These things cannot, we cannot make these things happen in our institutions. So these pictures show that actually these pictures uh, uh, are proof that these activities are going on in our public sector colleges as well. Now, the second slide is about understanding curricular activities. Now, what are curricular activities? Number one is core academic courses and subjects, the pure course of the subject that we teach. These are the curricular activities that we go on, discussing and explaining it to the students in our classroom. The second is the structured around the curriculum. Those activities that are not purely the syllabus. You don't read the book for these activities, but these activities are something that are structured in order to make the students understand the curriculum. These are, as you can see in the picture, these are lab work. Students are doing some lab work in the biology lab as seen in the picture, in order to make them understand the concept they have studied in their biology book. And second is the library. These activities, the library class, the library reading, in order to make them understand the concepts that are given in the book. And third is again taken from the physics lab, how things are being taught through their practicals. So these practicals are structured around the curriculum. And the third is aimed at the academic development. And of course, the purpose of all these activities, when we teach curriculum to our students through book or through practical, the purpose is to make them academically strong, in order to make them develop their academic growth, to get maturity and to get wisdom regarding any subject they are studying at their uh, intermediate, graduation, whatever level they are studying. They can achieve maturity and wisdom through that subject and full knowledge of the specific subject they are studying in their classes. Now, next we see what is the importance of these curricular activities, why we after all need to undertake these activities. First point is the core learning, essential for academic development and subject expertise. In order to make the students learn their core subject, their core curriculum, their syllabus, we
undertake these activities, and the purpose behind and the importance of this activity is to make the student understand the subject, whether it's bio, whether it's physics, it's sociology, it's mathematics, whatever the subject is. We want the students to be expert in that subject, to develop its comprehension, the comprehension of the subject. The students must develop the academic comprehension and expertise after the core learning of the syllabus of that subject. Then it is also important because they learn skill. When we teach them different curriculum, we are teaching them skill as well. The skills give them critical thinking, problem solving, and analytical skills, right? Whatever subject you're teaching to your students, you're giving them a skill. For example, you're teaching them biology, you're giving them a skill, how to deal with their everyday life and the concepts of different biological things that are around them, how they can develop a critical thinking, right? We can take many examples and examples of osmosis, for example. What osmosis actually means and how it actually helps in our everyday life. So we develop a critical thinking with the students, and this is a skill, how to analyze the concepts in their everyday life, and then how they can solve different problems with the help of the concepts they have developed after the study of that specific curriculum, and of course analyzing different things around them through their skills. And of course, the third point, the third importance of these curricular activities is to give accreditation and degree. This is something very practical, that after analyzing their skills, after developing critical thinking, the problem solving, and developing the expertise in any specific subject, what student needs at the end of the day? Any student would need a degree, a piece of paper that can make them work, that can give them some value in the market. So in order to give a proof in the market that yes, they know something about a subject, they get degree and accreditation after the development of the skills through curriculum and their syllabus. Now participants, we can see that how many types of curricular activities can be there. The activities that I have mentioned are just a few. You can add on and on as you can develop at your own. So this list can be ongoing forever, because this is a very innovative topic and you can add your own innovations in it. Well, some of these are lectures and seminar, of course, that we deliver in the classes. This is the formal type of curricular activity. And then the laboratory work, the labs are there in order to... मैम पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है. Voice clear nahi hai? I don't know. My voice is maximum. I think there's some problem at your end. Hassan, check it from your end. My voice is full. It's at the maximum, and there is no distortion as well. Please check it from your end. Disable camera. Disable. Is it better? They are writing clear, hai ma'am, it's clear. Students are writing that voice is clear. Should we move on, I think? Disable camera. Okay. We were talking about the slide. We were talking about the and we were on the point of lab activities. Lab is again a place, a platform where you study those activities that you have already read in book, and you are developing a skill out of those curricular activities that you taught in the classroom through your lab work. You give different lab work to your students, and these lab work develop skills in the students. They make their own projects, like, you know, how a cell can work, how a battery operated system can be created in the lab. And the students, they do different inventions there. They do different things in their labs.
they create their own things, and this is how they enact their syllabus. The syllabus is actually seen enacted in the labs. Third type of curricular activity would be field trips. We take students to different field trips in order to make them understand the concept of, let's say, any archives. If we take the subject of archives, in order to make them understand history, we can take them to different historical places. In order to make them understand the concept of social work and sociology, and participating in the community, we can take them to the fountain house and different other houses, trusts and welfare houses. And the students come to know how these concepts that we have studied in our syllabus, in our curriculum, how these concepts are being utilized in the society. And we can take students to the different field trips for such places. And then projects and assignments. And yes, we can give our students different projects and assignments, and they can develop their own, projects and activities in order to show that the concept they have studied is actually fully comprehended. And by applying those concepts, or by applying those skills, they have made their own work. Then, of course, the examination and assessment. This is the most important sort of curricular activities in order to check, in order to assess whether the students are fully equipped with the concepts and the syllabus they are taught. We examine them through written examination and through different sorts of assessments that can be oral, that can be activity based. We check our students through these two things. Well, we are done with the curricular activities. That this is how curricular activities help our students to understand that how we teach them different syllabus and different projects that are given to us. Now, participants, let me make a statement here that books are the same. Sometimes curriculum is the same that is taught across board in all institutions, and almost in a similar method by the teachers in all institutions. But why is it that some institutions lead while some institutions lag behind? I would here rather say that the difference is not in the way of teaching, not in the method of teaching. The difference won't be very much in the method of teaching or in the method of different, types of teaching. The thing that makes any institution great, any institution prominent, and that makes any institution lead then to the other institution is not the curricular activities. Actually, it is actually the co-curricular activities. The co-curricular activities are something that actually gives weightage, that actually gives name to any institution or to the working of any good administrator. Well, participants, now I would like you to say something. What do you understand about the co-curricular activities? This is the second part of my presentation and very important part also. Hassan, please unmute their mics so that they can share their ideas. Hassan, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please wait. Please unmute their mics. And show me. Well, participants, I would like you to share your ideas. Ji. Participants, one by one अपना mic unmute कर लें.
Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum Co-curricular salam. activities are designed to polish the abilities of students. When they participate in debates, they make enactments, they perform on stage, and they also participate in creative writing. And it is to Mhm. polish their talent. Good, 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 good. It's good attempt. Anyone else? Thank you. डॉक्टर जवेरिया here. वालेकुम डॉक्टर सलाम। जवेरिया बतूल। जी जी। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ जो है बच्चों को 24 ईयर 23rd ईयर तक एजुकेशन दी जाती है और वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि माजूर से इंसान बना देते हैं, खासतौर पे मेल फीमेल को। तो अब जैसे चाइना में आप देखें बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे घर के काम जो है वो स्कूल में एक्टिविटी कराई जाती है। अब हमारे यहाँ ये हुआ कि एक बच्ची से झाड़ू लगवाया गया, स्कूल में वो सफाई कर रही है, तो उसके ऊपर इतनी ज्यादा एतराज होना शुरू हो गए हैं वॉशरूम धोने के ऊपर कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है कि बच्चे से काम ही क्यों करा लिया। तो सबसे पहले तो क्लासरूम की जो सफाई है या कुछ है, हम बचपन में करते थे अपने क्लासरूम की सफाई, तो हम लोग इससे इतने दूर आ गए हैं कि सिर्फ हम कॉपी पेस्ट पे आ गए हैं। तो अगर हम करिकुलर में ये भी ऐड कर दें ना अपने एक्स्ट्रा करिकुलर में कि ये बच्चे अपना घर कैसे संभालें, अच्छे से बर्तन कैसे धोते हैं बच्चियों को। वेरी गुड। जी हाँ जी, वेरी गुड आइडिया, ये वेरी बात गुड। है ना क्लास में ऐड होनी चाहिए, क्योंकि वो माँ जो है वो You're अकेली काम right. कर I रही है। appreciate. Right. Anyone else? Assalamualaikum. Shafaq Jafri is here. Assalamualaikum, ma'am. Dr. Nadia Kamal from Government Graduate College, Chokazam, Layya. Co-curricular activities are especially those activities that are found by students that fall outside the realm of normal curriculum, actually. Am I right? You are very right, but firstly tell me how is the weather in Layya? I'm very hot. It's it's very hot, ma'am. Yes, but it's nice to to have people from very far away places, and we are all at one platform talking to one another. It's wonderful. जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम सुमेरा रियाज फ्रॉम लाहौर। Right. I want to differentiate between the co-curricular activities and extracurricular activities. Okay. As one of my colleagues was talking about the cleanliness and the other activities which we can take out in our institutions, that comes in the category of extracurricular activities. These co-curricular activities are actually done in the institutions to enhance their curricular concepts, like debates, like they go for science exhibitions, they go for milad, and like quiz competitions, speeches, and Okay, mushaira. then what? You are right. Okay, but what do you think, my dear? If we are teaching them the concept of cleanliness and community work, so where do you put it then? Isn't it a community work, a concept that is in sociology, and we, in order to teach them this concept, we can ask them to clean their own places first. What do you say about it? No, ma'am, that's right that we can keep cleanliness. हम उनको सिखाते हैं साथ के साथ, और ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की कि नॉट ओनली द करिकुलम हम उनको पढ़ाएं, बल्कि हम उनको ये सारी क्लीनलीनेस, पंक्चुअलिटी, एथिक्स, हाउ टू बिहेव इन द कॉलेज, Good, great. क्लासरूम, आउटसाइड द क्लासरूम। जी आप सही कह रही हैं। Anyone else? Anyone जी else who would like to say something? अस्सलाम वालेकुम, शफक जी, जाफरी वालेकुम बात कर सलाम। रही हूँ मैं जमींदार कॉलेज गुजरात से। जी। मैम मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाह रही थी इसमें कि आई थिंक सो दैट कि करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू आप डिग्रीज के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, लेकिन इन एक्चुअल माशरे में सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती हैं, उनमें थैंक यू, उनमें सिविक सेंस जो है वो डेवलप करती है, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू जो उनका नॉलेज होता है, मतलब जो कुछ भी वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में सीखते हैं उसका एक्सपोजर होता है, उनको मिलता है, वो उस चीज़ को वो माशरे तक अपनी एबिलिटीज़ को पहुंचा सकते हैं अगर, तो उसके पीछे उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती You हैं। are right. जी You are right. Okay. जी ओके, थैंक यू। वालेकुम सलाम।
मैं डॉक्टर फाखरा रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। थोड़ा सा करिकुलर और को करिकुलर में फर्क जो पड़ता है वो है प्रेमिसेस का फर्क पड़ रहा है। करिकुलर तो ये कि आपने सेमिनार या आपने Yes. इसको आपने अपने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी कहीं पे भी अंदर और टाइमिंग Yes. मसलन आपका You're right. स्पेसिफिक है। हाँ. जब आप इस नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट करते एक तरह से, आप मसलन उसको आउटसाइड द बाउंड्री आउटसाइड द टाइम लेके जाते हैं कि मसलन घर पे जाके काम करें। जैसे मैडम ने कहा कि सफाई वाली बात थी कि आपने ये सीखा कि अपने सराउंडिंग को साफ रखें, यू गो एंड क्लीन योर रूम। ये को करिकुलर है क्योंकि ये उसी लर्निंग को एनहेंस कर रही है, उसको मजबूत कर रही है। जो एक्स्ट्रा है टोटली डिफरेंट हो जाता है। मसलन मैं लिंग्विस्टिक की स्टूडेंट हो सकती हूँ और मैं स्पोर्ट्स कर सकती हूँ। दे टू आर डिफरेंट थिंग्स। एक लाइक उसका मेरे करिकुलम से कोई ताल्लुक नहीं हो। Okay, you're right. You're right. Now let's proceed. अस्सलाम वालेकुम मैम, एक सेकेंड। आप लिंग्विस्टिक स्टूडेंट हैं बट आप स्पीच कर सकती हैं, आप एड्रेस कर सकती हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके, आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं जिसमें आप फंड रेजिंग करें या कुछ भी। आपकी लिंग्विस्टिक भी काम आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी और साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप होगा। तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मैं इसमें Okay, आपको now थोड़ा let's सा proceed. अस्सलाम We will वालेकुम have मैम, our discussions. Participants, we will have our Yes, discussions ma'am. towards the end. Let's go through the slides first, and towards the end we will talk and share the ideas, and we'll discuss things, right? You'll be in a better position to discuss after going through the slides. Now, please Hassan, mute the mics. Now, co-curricular activities, as some of you have shared good ideas about it, and all of you have got some basic concept about the co-curricular activity. Activities that complement the academic curriculum but not part of it. Participants, let me tell you, this might sound a little lighter side of the, academics, a little lighter side of the topic. But let me tell you that co-curricular activities are so important. They are they are actually the litmus paper that actually change the whole scenario of your institution, the whole scenario of the students. The co-curricular activities are the activities that are there. Just a minute, please. Co-curricular activities are the activities that are there, that are taught to your students in order to make them good human beings. We teach them books, we teach them syllabus, and we teach them the digitalized, or you can say the written syllabus. But do you think that are we only producing robots after teaching them all these things? Here comes the answer. And here comes the interruption of the co-curricular activities. Here comes the presence of the co-curricular activities that give you the reply, that give you the answer. That co-curricular activities are the activities that turn those robots that we produce after teaching them syllabus and curriculum into human beings. These co-curricular activities actually groom and shape up your students, that make them living things. Just to teach them some books and ask them to memorize them, go after rote learning, and produce all that rote learning on your piece of paper at the time of examination would you take you to nowhere. That would only that would only show that you are producing robots, memorizing machines. But once you groom their personalities about the concepts you have taught them, once they live those activities, once they enact those concepts and they innovate those concepts, every student, when he or she learns any concepts, that student builds that concept in his or her own way. And this is the individuality of their work. This is how the co-curricular activities shape their personalities. It grooms the students. It makes them
good citizens. It makes them living beings. And this is how the culture and the society is built, because culture and society are living things. It grows, it changes, it develops. And who develops and grows the culture and society? Your students, who after learning, who after studying from institutions, they spread in the society, and then they play their part in the society. And how they can play their part? When they take part, when they participate, when they take part in the different co-curricular activities. So activities that complement the academic curriculum but not part of it. They actually explain the students what were the curriculum they were taught, what were the concepts they were taught. They are actually not part of that concept. Milad is not a topic that is taught in Islamiyat, but Milad is an extended concept of the importance of our holy prophet sallallahu alaihi wasallam. And what is the importance of, their zikr? What is the importance of his zikr? And of the sharing of uswa hasana with our students and public at large. This is the concept that we build when we, when we held those mehfils of milad in our institution. So these, I hope that you can now understand that these are not the academic curriculum, but these are the part of the academic curriculum that we are taught, that we teach in our classes. Those activities are not a part of that curriculum, but these activities are an extended enaction of those curriculums. For example, sports, we teach them physical education. The subject of physical education is there. And the sports that our students take in our institutions, those sports are part of those concepts that are taught in the classes. And those, let's say, sports day. Sports day is not part of the academic curriculum. We are not taught as a chapter. This is not taught that what is a sports day and how you know, the, how you can hold a sports day in your institution. But sports day actually is part of the curriculum, that how sports can build healthy body and healthy brain. Similarly, volunteering work, that is part of sociology and social work subject. Internships, that students go and do their internships in different industries. If they are students of commerce and business studies, this is how they understand that the concepts and the things that we were taught in our institutions, how these are uh, applied in the market, in the practical life. And similarly, different cultural events. And all these pictures, participants, you can see again, these are from my own institutions. It is like your institution. My institution is like your institution, because these are all public colleges. And see how well these can be performed in our public institutions. This is picture of sports day. This is the parade going on when we teach them discipline, when we teach our students organization, teamwork. This is a picture of the parade. In the middle, you can see a picture of the girls' guide. The students, the girls' guide are there. They have arranged a function, a ceremony of this fine arts, and the handwork done by the students, and how these students are actually taking part in this event. And then again, this is the picture of the sports day and how students they are performing. Next comes understanding co-curricular activities. Co-curricular activities are the activities that complement the formal curriculum. Just I explained you just the same idea, that these are the activities that are not mentioned in the book, that are not part of the curriculum, but they complement your curriculum, they strengthen your curriculum. The curriculum that we teach it to our students in the classes, these activities help them, strengthen them. These activities are actually there going side by side with the curriculum, but curriculum specifically does not mention about these activities. These activities are arranged by the administrator and the teachers
in order to make the students understand the ideas that we teach them. And these activities are not for credit. You don't give any extra marks to the students who are participating in the sports day, in the cultural, events, in any other events. You don't give them marks. But what you do, you actually enhance their learning. You actually groom their personality. You actually build skills in them. How to develop yourself as a person, as a character, while studying in the public sector colleges. And these activity aimed at the personal growth of the students. Again, the pictures you can see here. The one picture is towards your right. There's a student of my own institution. She achieved first position, and she's standing on the position bar on the first place. On the top place, you can see how after learning through different topics, you can perform good in the sports after following the rules and regulations and different concepts that you teach them in the physical education. If you understand all those rules and regulations, you can win in any game. And she has actually achieved first prize. And there down the rear picture on the right side, again, this is a picture of Mehfil Mushaira that we held in our institution. This is again, we teach them about poetry in our Urdu literature. We teach our students about poems and poetry and what is the effect of poetry on human beings. This Mehfil Mushaira, in this Mehfil Mushaira, we call different very famous poets who came and they shared their kalam with the students. And again, this is about the personal grooming and the psychological grooming through poetry of the students. The middle picture is again from a cultural event, that how students, they are playing their roles from different provinces, and they have they are wearing different attires from different provinces, and they are showing how national unity can be achieved through harmony and through cooperation and through mutual love and respect. Again, there's another picture of the proctor standing in front of the board. This proctor, along with her team, has made this board regarding the different rules and regulations about the institution. This again aims at the personal growth and development, the rules and regulations that are taught to them through different disciplines, how these students can practically make them implement. Now, next importance of the co-curricular activity is the holistic growth. It encourages well-rounded growth, including emotional, social, and physical development. You see, holistic growth, that is the main target, that should be the main target of any institution. My dear participants, let me say here that, in order, if we were to teach only the curriculum to our students, this can be done by the students themselves at their homes. The students who appear privately, the students who study as a private student, even they can go through the syllabus and the curriculum. Even they can comprehend the curriculum. They can memorize that curriculum. They can rote learn that curriculum and produce the same thing in the examination. Even they can go through the examinations. Even they can get a degree. But what is the difference? Why parents are willing to pay more and get their students enrolled in the institutions rather than to achieve their degree from their personal learning and from the private as a private candidate? The reason why they even pay more, why they enroll their students in the institutions, and they're willing to pay more, not in the form of a fee, a college fee, but also in the form of their daily expenditure, the expenditure that incurred to them in the form of the fare of the car or van or rickshaw, or whatever their mode of transportation is. The parents bear that, and the daily expense that the students use in the form of their own expenditure. Parents bear all these things because they want their children to have
emotional, social, and physical development. They want a grooming that can be seen in their children. They want, they want their character and the personality of their children to be built in a holistic way, so that their children are a better human beings. They are better, citizens. They are better, mature and wise persons. That's why they pay even more. So the public institution, they must indulge in the co-curricular activity, because the only purpose of teaching our students is not to produce more robots. The purpose is to produce good human beings, good society, good citizens who will build good society, and then as a nation, as a whole. It also gives them soft skills. The co-curricular activities, it gives soft skills to your students. It enhances communication. Eh, the students who take part in debates and speech competition, the ideas that they learn from their different subjects. For example, there's a speech competition on our historical topics, on our, national heroes. When they write those speeches and when they perform those speeches on the stage, it gives them confidence. It enhances their communication. It gives them a leadership quality as well, that how to address people at large and how to make their point and understandable to to the people who are sitting over there. So these activities enhances their soft skills. It gives them a teamwork. If they produce something as a team, it also gives them a teamwork, and of course how to manage their time and management skills. Then the networking opportunities to connect with people and professionals, and stress relief. Again, this may sound very light and very soft, but it is very, very important. The stress that we put on our students in the form of big and heavy books, in the form of so many number of books of different subjects and of different disciplines. They are studying all through these books day and night, and they are memorizing them. These activities give them a little break. When these activities are held in the institutions, students get a little break. It sounds them very pleasant, because these are little informal. And this informal environment in the college gives them a relief from the everyday stress of the classes and the examinations and the different tests they are going through in their daily routine work. Now, how many types of co-curricular activities can be there? Again, participants, I have just mentioned a few. The list can be ongoing, because these are very creative topics and you can put so on and so forth, whatever you feel like. This can be invariable. This can be infinite. Sports and athletics. Different activities are clubs and societies. Again, debates, club, drama society, volunteer work and community service, internship and work study program, cultural activities, for example, art and calligraphy. Again, these are some of the activities that I have mentioned, and I have also added some pictures from my own institution. A participant you can see here on the right top, the picture is begging is a social evil. This activity was held by the sociology department. You can see the principal and HOD of sociology and the different teachers, and uh, these teachers are there, and you can also see the students participating and bringing an awareness in the society that begging is a social evil. So some of the social evils that are taught in sociology, one of that project was how to bring in awareness in the society about begging. Then down bottom on the right side, there's a picture of, again, a fancy dress and a cultural event that students are enacting. And in the middle bottom, you can see the picture of a debate. Student is, she's debating on her topic. And on the left side, you can see a picture of the proctoral group with the principal and other teachers, that these proctors, these prefects, how they help the teachers
in order to maintain discipline in the institution, and how organize different activities that they organize, and arrange and manage different activities along with the administrator, principal, and the teachers. Now, what is the main thing? Now, the main thing here, participants, is that how to create a balance between curricular and co-curricular activities. Because we all know and understand that the time that is given to any student is very short in any session. Like, we get our students enrolled around August and September, and they are in the institution till, let's say, March. And after March, they are preparing for their final examination, and of course uh, they are very shortly seen in the institution. Very scarcely uh, 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 they are available in the campus. So months are very few. There are hardly 4 or 5 months that are there, and in those 4 or 5 months, we need to teach them entire syllabus, entire curriculum, and the practicals that are there in the syllabus, that are also to be done within the same months. And even in these months, you see, there are certain public holidays, and that even shortens the length of that academic session. Now, in order to see all these things, we have to keep in mind that there should be a balance. A balance has to be established between the curricular and the co-curricular activity, because the shortage of time cannot be taken as a plea where we can sacrifice the co-curricular activities. Because, as I just said, that co-curricular activities are the activities that make any institution big, that make an institution great. Any institution can make its name out of the co-curricular activities. The co-curricular activities actually uh, are these are the activities that are needed to groom our students and to build the personality of the students. So one thing is established, this fact is that we cannot sacrifice them. So then how we can make teachers to perform both the sides of the picture? It's only through balance. Holistic education, importance of a well-rounded education, how we can create a balance between these two activities, how we can make the students engage, enhancing student engagement and motivation, and real world skills, how we can prepare our students to meet the real world challenges that about regarding the concept that we have taught them. And what are the key challenges in managing these activities? Now, having said that these activities should be there, and we cannot sacrifice these activities, and we must create a balance in order to perform these activities, what are the real challenges? As I just said, first is, of course, the time management, that how within the short academic session, all these activities are to be held along with teaching of the curriculum. Next is the resource allocation. Again, this is very important. And this is that mostly lies with the principal and the teachers, that how resources can be managed in order to hold these activities. Because all these activities, of course, need good finances. And these finances have to be generated by the principal and the teaching staff, so that students can have good function and events in their institutions, ensuring adequate resources for both curricular and the co-curricular activities. So this resource allocation must be focused by the principal and the teachers. That next comes student participation. Now, student participation is but mandatory, because without the participation of the students, there is no point at all of holding these activities. The purpose is to build the personality of the students, to groom the students, to shape up the students. So in order to achieve our target, the target the audience should be there, and students are a target audience. So the student participation is must. Make your students, motivate them, ask them to take part in these activities. Because let me tell you, a student who has taken part in the co-curricular activity throughout his or her academic session won't be equal to a student who has not taken part in any of the co-curricular activity throughout the academic session.
There would be hell of a difference between these two students. And then administrative cooperation, there must be, full cooperation extended by the principal and the teachers in order to hold these co-curricular activities. Now, strategies for effective management. One is integrated scheduling, resource management, and student support system. Now you can see in the integrated scheduling, there are two main points. Coordinated timetables. Timetables should be devised in such a way that prevent overlap and allow students to participate in both type of activities. Timetables must give space to the students so then they can have time and space available for them to fulfill both these activities. And buffer period, again, include buffer period between classes and activities. This can be zero period, this can be sports period, this can be library period. And in our times when we were students, there were tutorials. Those periods were very important, and those periods actually meant a lot in order to build a rapport and a communication between teachers and the students. Next is the resource management, funding and sponsorship. If any institution is lacking in the resources, the administrator and the teachers, along with the students, can go for fund management and sponsorship, and they can seek funding from the alumni, from different businesses, and they can ask a different philanthropists to extend their resources to the institution and grant support for the co-curricular activities. And again, in the picture, you can see here participants. This again, the picture is taken from my own institution. On the right side, you can see there are two gentlemen standing. One is our special secretary, higher education department, our own worthy secretary. He came to our institution, Mr. Munibur Rahman Saab, and the event was a donation of computers by the second gentleman who is standing here. He is additional session judge, district and session judge Saab. He donated computers to our institution along with a water cooler and a photocopier. And our worthy secretary, special secretary Saab, is inaugurating this donation ceremony. So this is how fund can be sought from different businessmen and community groups and different philanthropists. And the second is the activity you can see that was broadcasted on C42. The principal is giving interview to the C42, and the activity was that the Nadra van was called in the institution, and the students were issued their ID card in the institution with the help of the Nadra. Uh, we requested them to send their van in the institution, and the students were given the facility of ID card, their identity card on their doorstep. Next is the student support system. Advisory groups. The principal must form some advisory groups that can support students, that can make them, that can help them in order to hold any event and function, and that can extend their mentorship, implement advisory and mentor programs to guide students. Again, you can see different pictures here. Students are there. They are performing different activities. And here on the left bottom, you can see panel of different advisors and experts sitting in the institution, where the director education colleges is sitting here along with the president Lahore Chamber of Commerce and the managing director CEO of Shahid Barki Institute. They are sitting here. And again, that was the event about the knowledge ceremony, knowledge economy, and the role of information and technology in our economy. So leveraging technology, dear participants, you understand, this is very important. Technology has taken over all other things nowadays. So the use of technology and digital platforms is very important in order to make your students perform different co-curricular activities. So provide your students with digital platforms. Digital platforms for scheduling, tracking participation, and providing resources. Next is, of course, online resources. Offer online courses to your students about different activities they want to learn about, and resources. Ask different resource persons, even online
line that they can talk to your students, they can extend their expertise and consultancy to your students in order to share their ideas and experiences. These activities have to be collaborated, of course. You can see here on the slide that the stakeholder involvement is there, involve students. Students are the stakeholders, and your faculty members should be there, administration, all these are the stakeholders, and all these must be there on the same page. Again, the feedback mechanism, this is very important. Regularly gather and incorporate feedback from your student and staff. Ask your students to give feedback so that the administration, the college administration can understand whether the all those efforts, all those untiring work that they are undertaking, are they producing some good results? Are they actually extending something to your students? Take their feedback, please. Promoting participation. In order to promote participation of the students, what you need to do is you offer different things: incentive and recognition. Offer incentives and recognition programs for active participants, give them certificates, give them medals, so that they feel good that they are actually gaining something in return if they are participating in the co-curricular activities. Again, you can see our worthy special secretary, higher education department, is announcing different positions to different participants who took part in different co-curricular activities, and he's announcing their first, second, third position. Awareness campaigns should be there. Ask different philanthropists, different advisors, different experts from different discipline to come and bring an awareness to your students for the co-curricular activities. Role of educators and administrators: support and mentorship. Provide ongoing support and mentorship to your students, and develop a policy. Develop and implement policies that encourage balanced participation in both curricular and co-curricular activities. You can see here, again in the picture, shields are given to the worthy guests. At the right bottom, the middle picture is again of the staff who are planning how to provide mentorship to the students. They are discussing different things with the students. Students are also sitting here. So this is how they are extending their support to the students. And on the picture towards your left, you can see pictures with the different certificates and awards, and they're happy. You can see smile on their faces, and their happy faces are there, that after participating in the co-curricular activities, they have gained something in the form of certificate that can, of course, give them good marks whenever they are going to apply for some job. Support and mentorship on the part of the educators. Academic advisors. Educators are the academic advisors. They serve as academic advisors to help students to choose courses that their academic workload and co-curricular interest. Mentorship, again, engage in mentorship programs to guide students in their personal and professional development. Skill development workshops. Conduct workshops and seminars on time management, study skills, and stress management to help students balance their commitments. Role models. Teachers are, of course, role models. Principals are role models. Act as role models by participating and in educating curricular activities, demonstrating the importance of a balanced approach to education. Now, what are the support and mentorship that can be extended by the principal? Student support services. Here in the picture, you can see principal is herself participating in all the events. Feel that they are part, the principal is a part of everything that is going on in the campus. Student support service, accessibility and inclusion. Include your students in all your activities and make them all these programs accessible to your students. Resource allocation. It is against the duty of the administrator how to allocate resources for all these events, and policy should be devised by the principal in order to implement all those co-curricular activities. Policy development and implementation on the part of the educators. The curriculum is already designed, but how to divide that curriculum, how to teach that curriculum in the academic session, that is to be done by the teachers, the educators. Integrate co-curricular components in the curriculum where possible, such as service learning projects, internship, and research opportunities. Assessment and feedback that is given by the teachers. You can see here registers that are showing the marks of the students
who have taken place, who have conducted good practicals and the different other assignments that are given to them. Policy development implementation again is very important. Strategic development, uh, regulatory compliance, partnership development. These are the developmental programs that are done by the administrators. Now, moving on to the next slide, facilitating collaboration and communication. This I think you can easily understand how interdepartment collaboration can be worked on. You can ask different departments to come to your institution, talk to your students, and make them understand the importance. Like different public sector, you can call rescue 1122 so that they can come to your institution and ask the students. They can be a part of the public service. Similarly, you can ask the persons from the ED center, from the fountain house, from the SOS village. They can come to your institution and talk to your students about the community work. Facilitating collaboration and communication. This is again the task of the administrator, how to facilitate the collaborative work. Promoting participation and recognition. This is again by the educators. Promoting participation and administrator and recognition by the administrators. Both these ends are to be there from the end of the administrator and from the end of the educator. Ensuring sustainable and equitable practices. These programs should be sustainable. These are not to be held once or twice a year. These must be performed on regular basis in the institution. Now, you can see towards the end of this entire presentation, the sustainability and equity policies are placed, because these are the most important things. If the programs are sustainable and if it's equitable, every student is given an equal chance to participate. Every teacher is given an equal chance to participate in the co-curricular activities. It is only then that an institution can gain repute and a good name. Now, towards the end, if you have any questions, it will be more than a pleasure for me. Hassan, please unmute the mics if they have some point to discuss or question, if they want to question something. You can also unmute all mic. जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। मैं नौरीन जी मैडम मैं नौरीन साबिर बात कर रही हूँ, कसूर कॉलेज से इंग्लिश डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ। और मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम फाइन, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द वेरी ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर एज वेल। मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि हमारे पास जो है वो एक बीएस प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ हुआ है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड भी होते हैं, बच्चों के अभी मिड स्टार्ट हो गए हैं, फिर देन वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द फाइनल एज वेल। तो उसमें हमारे पास को-करिकुलर एक्टिविटीज जो है उनके पास टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू आ जाता है, स्पेशली व्हेन यू से हमें इंडिविजुअल फोकस भी करना है। तो इसको कैन यू सजेस्ट समथिंग कि हम इतने थोड़े टाइम स्पैन में किस तरह बच्चों को इंडिविजुअल फोकस करके उनका वो करिकुलम भी कंप्लीट करवाएं और इसको फोकस भी करें। थैंक यू वेरी मच मैम, आप इसके मतलब मुझे थोड़ा गाइड करें। I have some ideas for it. Actually, I just, as I said, this may sound very light, but this is not a light subject. This is very important topic. Out of this topic, you can build your institution and your students. So the point that how we can manage time, my dear, it is only in the timetable that you can incur such periods. I mentioned about the buffer period, about the zero period, and even you can arrange your timetable in such a way, like if you are having 6-day classes, maybe you can have 5-day about for the curriculum, and the 6th day can be about any of the activities that might you can hold even in your classrooms. जी मैम, एक्चुअली हमारा ये कि हमारा एनुअल सिस्टम भी चल रहा है साथ एट ए टाइम, और साथ बीएस प्रोग्राम भी चल रहा है, और हम पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, तो हम यूजुअली 4 डे की क्लास को लेके चलते हैं, यूजुअली इस तरह इनको प्लान करते हैं। तो उसके साथ साथ फिर जब हमने वो 2 दिन है हमारे पास, इसमें हमने उनको प्रेजेंटेशन या बच्चों का दिया हुआ काम भी चेक करना है, तो इट बिकम्स रियली वेरी हेक्टिक टू मैनेज दैट। प्रैक्टिकली ये मुझे बहुत मुश्किल and this is usually this is going on in all the institutions.
ये ग्राउंड रियलिटी हमारे गवर्नमेंट जो सेक्टर के कॉलेजेस हैं उनमें इस तरह ये जो प्रोग्राम स्टार्ट तो किया गया है, लेकिन वो जो हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें स्टाफ भी है आपका और सारी वो आपके रूम्स हैं, वो चीजें चूंकि पूरी नहीं है हमें, तो बहुत सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं इस चीज के लिए। I know, but you know, it's only through timetable and the division of the time. You know, this is about the time management. The administrator and the educators, they need to sit together, arrange your timetable and your college timings in such a way that you can manage to get some time for your students other than the teaching of the curriculum. कोऑर्डिनेशन के साथ मैम इसका सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम दिस इज डॉक्टर सुमेरा सत्तर फ्रॉम अच्छा मैम, मैम मैं काफी टाइम से इंचार्ज को करिकुलर एक्टिविटीज हूँ एज यू टॉक्ड अबाउट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेल इलेबोरेटेड सेशन। Thank you, and my dear, I hope you understand this is a whole science. It is not a light topic. Perfectly understood, ma'am. Ma'am, I just have this query that occasionally I have tried to bring different public and private organizations to hold some kind of talk or some kind of discussion or some kind of introductory sessions for the students, but I have felt that occasionally my principal remains reluctant, as she says that whoever comes to the college, that particular organization has to come through directorate colleges. And when I deliver or convey this thing to the said organization or the organization I want to invite, तो वो पीछे हट जाते हैं, बिकॉज वो इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते कि हम उनको एक वो चैनल के थ्रू यानी होके आना पड़े। तो you are from which college? डायरेक्टली दिस You are इज from which खदीजा उमर college? कॉलेज टेंच भाटा रावलपिंडी जी खदीजा उमर कॉलेज टेंच भाटा रावलपिंडी Rawalpindi? yes ma'am. Acha, my dear, let me explain here. Your principal is right that whosoever comes to college, whosoever is invited, must come through a proper channel, and it is as simple as that. Just write a letter through your principal to the director education colleges, whosoever your divisional director is, that we want to arrange this function, and the purpose and the objective of this function is this, and we want to invite this celebrity or this important and renowned person. Please grant us permission. And believe me, divisional headquarters will grant you permission within no days. It is as simple as that. And this is how we also, undergo through this procedure. And it's never troublesome for us. अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं वाइंड अप कीजिएगा प्लीज। जी फिनिश हो गया लेक्चर। जी ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।